Please give your students a reminder because only a few students have joined us on YouTube Live. So we are going to start in 2 minutes. So just drop a message on your students group that we had already started. Okay. So good morning, everyone. Thank you for joining us for today's orientation on GE elective and skill enhancement course for BA honors and BCom honors and BA program students. So today, this orientation is divided into two parts. First one is for GE, and the another one is for SEC. One by one, each department is going to come forward and give the orientation about the papers being offered by them. The students are advised to go through these syllabus first before filling the particular form. Mansi, next slide. So basically, which subject need to be chosen and what subject is going to be taken, वो आपको पूरे बच्चों ध्यान से देखना है कि जीई बेसिकली है क्या. जीई इज द डिसिप्लिन विच यू स्टडीड besides your discipline. For example, if you are a student of applied psychology, so you are going to study a subject besides applied psychology. Next, the form which we are going to float after the orientation will have all the options which we are going to take from you, and those options need to be filled by you. जो ऑप्शंस आप फिल करेंगे दैट शुड बी टोटल 4 ऑप्शंस, एंड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ दोज प्रेफरेंसेस वी आर गोइंग टू अलॉट द जीई. आपको फॉर्म भरते हुए ये बेहद ध्यान से फॉर्म भरना है कि आप अपना डिसिप्लिन पहला तो ना भरें, दूसरा प्रेफरेंस आपकी वही रहे जो आप पेपर चूज करना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट आप रिपीट ना करें. इन केस आपने फॉर एग्जांपल अप्लाइड साइकोलॉजी के आप स्टूडेंट्स हैं और आपने 2 सब्जेक्ट्स में मैथ्स फिल किया है तो विल गोइंग टू काउंट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज 1. इन केस आपने चारों ऑप्शंस एक ही भर दिए हैं, जैसे कि आपने अप्लाइड साइकोलॉजी में चारों ऑप्शंस मैथ्स के फिल कर दिए, इन दैट केस द चॉइस ऑफ द कमिटी विल बी फाइनल इन एलोकेटिंग दी सब्जेक्ट्स. नो स्टूडेंट इज अलाउड टू फिल द फॉर्म ट्वाइस. कोई भी स्टूडेंट नहीं फिल करेगा. द फॉर्म इज गोइंग टू टेक 1 एंट्री एट अ टाइम. नेक्स्ट स्लाइड, मानसी. This is about SEC. Next. So the last date to fill, these are the few things which I have already told you. सबसे पहला आपको preferences fill करनी है. Next, preferences वही order के preference में होगा what you want to study. मिनिमम 4 सब्जेक्ट फिल करना आपके लिए मैंडेटरी है. इट्स नॉट लाइक कि आपने फर्स्ट और 2 चॉइस फिल कर दिए हैं, लेस 2 चॉइस विल गोइंग टू बी लेफ्ट ब्लैंक. नेक्स्ट, सेक्शन की जो स्ट्रेंथ है दैट इज गोइंग अगेन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड allocated to each section. Some of the courses have 2 sections and some of the courses have 1 section. तो वो आपके डिपार्टमेंट सभी आपका ओरिएंटेशन करके बताएंगे कि उनके टोटल सेक्शंस कितने हैं और उनके सेक्शंस के नंबर ही बताएंगे. सेक्शन स्ट्रेंथ इज अगेन द परव्यू ऑफ द कमिटी एंड द कॉलेज. नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स की जो एप्लीकेशन है उसकी लास्ट डेट है 18th of August. जिस प्रायोरिटी पे हमें एप्लीकेशंस मिलेंगी ऑन दैट प्रायोरिटी बेसिस वी आर गोइंग टू एलोकेट द सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, टुडे इज 14th August. आज अगर हम ओरिएंटेशन के बाद गूगल फॉर्म का लिंक फ्लोट करेंगे, इन केस किसी बच्चे ने 2 फॉर्म फिल किए, 2 स्टूडेंट्स ने आज ही फॉर्म फिल किए हैं, सेम डेट है बट टाइमिंग्स अलग है, तो जिसने पहले फॉर्म फिल किया है उसकी प्रेफरेंस पहले ली जाएगी. ओके, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जो बच्चा पहला प्रेफरेंस देता है उसी को वही सब्जेक्ट मिले, but still we are bounded by the number of the students and the sections limit. So in case उसका first preference नहीं मिलता है, then we are going to jump on the second preference. तो आप ये मत सोच के फिल कीजिएगा मैंने फॉर्म में कुछ भी फिल किया, because many of the students complain that I want to study only the first preference, but because of somehow reasons मैंने कुछ भी options ऐसे ही choose कर लिए. So that thing is not going to be entertained. So please very cautious while filling the form. So now I am handing over the orientation platform. One second, एक बार फॉर्म दिखा देना मानसी. आई एम शोइंग यू द फॉर्म, गूगल फॉर्म लिंक जो आपको फिल करना है. जीई और सेक के लिए फॉर्म कॉमन है, बट देयर इज एन सेक्शन वाइज फॉर्म.
तो ये जो फॉर्म है ये आपको मिलेगा. वी विल ऑल्सो शेयर दिस फॉर्म विद द टीचर्स. जो ओरिएंटेशन कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स कैन आस्क फॉर इट, दे विल शेयर ऑन दिस ग्रुप. इसमें सारी डिटेल्स लिखी हैं, प्लीज डिटेल्स जरूर पढ़ें, बिकॉज स्टूडेंट्स जस्ट फिल दी फॉर्म विदाउट गोइंग टू दी terms and conditions or the preferences or the information given in the your Google form. Once you now jump to the this form section, इसमें बेटा email ID you need to fill that is being registered with the college. Next, student college roll number है आपका. Student college roll number आपका format जो year है, this one is year, NN denotes year and then your college roll number. 4 digits college roll number चाहिए हमें. For example 20/2022. This one is your complete roll number, university exam roll number. It's not enrollment number. काफी बच्चे अपना enrollment fill करते हैं. Please don't do that mistake. Next, your full name, your mobile number, again registered with the college. Next, here you need to mark the course of which you are in the course in which you are admitted. For example, you are a student of a BCom honors, then click on BCom honors. Okay, in case you are a student of BA honors, then there is a list which is going to be there, और वहां से आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, इफ यू बिलोंग टू फर्स्ट 2 कैटेगरी, यू विल बी जम्प टू दी ऑप्शन नंबर 7. अब यहाँ पे आती है आपकी चॉइस विच इज रिलेटेड टू जनरल इलेक्टिव. चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2, चॉइस नंबर 3 एंड चॉइस नंबर 4. We have kept all the choice mandatory for you to fill. For example, applied psychology के हैं, तो besides applied psychology you are going to select any other subject. So course के साथ आपका paper name भी है. It will easier to make you select the subject. Next, same यही आपकी जो content है 4 times repeated है. The subject you have chosen in the first, avoid choosing the same option in second, third and fourth option. Okay, so this is the form. After choosing all these options, next this one is third choice and this one is fourth choice. So after choosing all this, your form will be done and you need to submit the form. Okay, in case of any query, the mail ID is there on your website. Please send your queries on that mail ID only. So now let Mansi stop sharing. I'll ask the departments to come forward and present their papers. So the very first department is applied psychology. Hello. Hello. So, good morning, everyone. A warm welcome to all of you, students and faculty. First of all, before introducing the paper, I would like to introduce our faculty members. I am Dr. Ekta Khamri, and with me I have Dr. Ashima Sharma. So we both will be taking the paper. And as you can see, as Renu ma'am had presented earlier, that the paper which we are offering for this semester is abnormal psychology. So as the name suggests, you'll be able to gauge something that here we'll be giving you basic fundamental knowledge about mental health and different diagnostic and treatment for different disorders. So before filling up, just keep one thing in mind कि अगर आपने ये psychology पहले लिया है तो आपके लिए ये easy होगा करना, and plus you can pursue this in your masters. And as in for other papers, this paper also has 4 units. The details we'll be sharing with you people during our first class, and we both will be taking in after every completion of every unit, we'll be taking in your assessment in the form of PPTs. Ekta ma'am, your voice is too low. Let me increase the volume. Is it better now? Yes, ma'am. At least audible. Children, is it audible, everyone? Renu ma'am, is it fine now? Ma'am, your voice is pretty much clear. Ekta ma'am, can you speak something? Is it clear now?
Ma'am, Am I audible? ma'am, No. now it's fine. Now it's fine, ma'am. Okay, okay. So should I repeat? आप तो नहीं सुन पाए थे? मैम नहीं, क्लियर तो नहीं ठीक था है, but- ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ. तो बेसिकली सेमेस्टर 3 में साइकोलॉजी में we'll be floating the paper abnormal psychology, and as the name suggests, we'll be basically focusing on mental health, differential diagnosis of different disorders and how to treat them. So this we'll be doing, and it will have 4 units, and after the completion of every unit, we'll have our internal assessments in the form of PPT, assignments. Depending upon the unit, we might also have role plays as the demand of the paper is. So more details we'll be telling you in the first class when we meet you people. But when you're filling in any GE, irrespective of whether it is abnormal psychology or mathematics or economics, keep one thing in mind. एक तो आपका interest होना चाहिए उस subject में, और अगर आपने पहले पढ़ा है तो try to take in that subject, because then you can do your masters in that subject. If you keep changing your GEs for every semester, then you won't be able to do masters, but you can know about the subject. Anything else you want to add? Ma'am, I'll just add, but then if you taking, as ma'am said, abnormal psychology, we would be in this particular units being covered. It we will be talking about, you would be studying about, different basic, in a general terms, the how to your mental awareness and how the concept of mental health vis-a-vis taking care of, what is abnormality, for example, what are various, obsessive compulsive disorders, how the phobias are phobic, you must have heard about in general terms, various phobias. Then talking about, unipolar and bipolar, it would be talking about in general psychology, catering to highlighting the abnormal. When we talk about abnormal psychology, as the paper name, we talk in general the phobias, the basic disorders, and what are the basic ways to intervene, to identify them, the treatment plans, and what are the root causes of it. No, definitely, as what Ekta ma'am said, orientation and inclination towards the subject prior to it would help you definitely to get, have a further learning from this paper. Second, the most important, if you have continuity in 2 years, it will definitely help you in master's level, and the interest has to be there. Subsequent tests like any PPT, role play, clinical examinations, filling up of the questionnaires in form of the clinical assessment, various disorders will be highlighted, which will gradually be unfolded as and when you come, and the courses we go unit by unit. So broadly, there would be unit 1, which would be talking about general what is abnormality. It talks about the different criteria to describe why a particular, for example, there are symptoms, it falls in categories. Second, it would be general, more detailed disorders like phobic disorders, obsessive compulsive disorders. I will not be going into detail the topic wise, but general overview I'm giving you. And unit 3, for example, talks about more of your, eating disorders. It talks about the conversion disorders, and fourth, the mood disorders. In general, abnormal psychology talks about psychology consider into various mental aspects using these disorders we are talking, and how we can apply and assess and verify. So you interest and the orientation is very important. And as far the difficulty level is concerned, that could be worked upon. If you have any issues, then we are there to help you, to guide you further on it. Yes, ma'am. Ekta ma'am, anything you need to add, ma'am? अभी आपने आशिमा मैम ने इतने सारे डिसऑर्डर्स के नाम लिए, सो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, बिकॉज सम ऑफ यू माइट हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, बट लाइक शी मेंशन्ड that we will start gradually.
First, you Yeah. will learn the concept of abnormality and normality. Normality. And she also mentioned one thing which is very interesting, that is role plays. So through role plays, we will teach you how to diagnose a disorder. You know, पहले आपको पता होगा ये नाम, पहले आपको बताएंगे, कई लोगों को नहीं पता होंगे ये नाम. So आपको घबराने की बात नहीं है. It is a gradual process. And slowly, first we will give you inclination towards these general terms you might have heard of in layman terms. You might not, but it's not a typical that we will like you set up in a clinical setup mein aap jaake you working on. It's a gradual exposure to one particular aspect of abnormality and normality, and then you goes further. And it will also, you know, burst your bubbles in a lighter note. I would like to tell you, like जैसे आप लोग जब बस में travel करते हो या कहीं भी किसी पार्टी में जाते हो, आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और आप बोलते हो साइकोलॉजी, and they are like मेरा माइंड पढ़ो, मेरा हाथ पढ़ के बताओ. So now you will know that it is not this. It is beyond this. You will learn these disorders and normality, the concept of normality and how to treat them in this paper. So it is in a scientific manner, not layperson term. Okay, Yeah. ma'am, the questions are coming on the YouTube, so we are going to take the questions in the end because the questions are common. So now I'll request to computer science department to take over and have a brief thing about their GE paper. And in case, ma'am, you want to reply Ashima ma'am and Ekta ma'am on the YouTube, I'll share the link. Okay, in case you want to reply them on the chat box, so you can also reply them. Sure. Thank you. Okay. Yes, So good from morning to all computer of you. science department. Yeah, ma'am, am I audible? Yeah. Yes, thank you very much, ma'am. So first of all, I would like to welcome all the students in the coming semester. And as far as the GE paper is concerned, there are 4 G papers basically offered in the computer science area. 2 of the G papers, I think the students had already taken in the previous semester. Right now, they have 2 of the G papers that have to be undertaken by them. One is computer networks and another is the computer cybersecurity. The information related to the cybersecurity will be given by Rima ma'am, who has already joined us. First of all, if I talk about the computer networks, this is a very promising area in the IT industry. And if you ask me that what the career opportunities are going to be happen after the doing this particular G paper. So first of all, you should understand that in computer networks in the G paper, the course is very simple and fundamental. You will be taught basically the fundamental concepts of computer networks, internet, little bit introduction to the web designing. All these are the, a very basic component in the computer networks. But after after the completing the undergraduate program, you have a lots of opportunity once you pursue the certified courses in the computer networks, including CCNA. It basically spans from 6 months to the 2 years course. And I would like to tell you that you will be amazed to do that in CCNA course, there are basically the people from any of the stream, whether it is from BA program, BCom program, or the BSc, they can take the admission in that course, and it basically offers the opportunities you can start with a very fundamental, like you can seek the job as a tech support in the computer networks. You can go for you can go for computer certified network programming. You can go for computer certified network administrator, and finally computer certified network engineer. I think the most important thing is that I think the people who are not from the computer science background, and if they think वो सोचते हैं कि क्या वो इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, तो बन सकते हैं, because there is the option of computer certified network engineers. So CCNA course is a very promising course. और इसमें जो ऑफर्स है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इंडस्ट्री में क्या आपको ग्रेजुएशन के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है अगर आप ये कोर्स करते हैं, जहाँ पे एंट्री लेवल पे आपको 3 to 4 लाख आपको मिलता है, एंड आफ्टर 5 to 6 years एक्सपीरियंस इन द नेटवर्क एरिया, यू कैन fetch the amount of 12 to 15 lakh package, right? What are the companies that offer the job opportunities if you do the CCNA?
the companies including, there is HP, SCL, Oracle, Cisco, and the Google, which you all, I think you have heard about the company. So last but not the least, I just want to tell you कि जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स का पेपर है, इसमें आप जानते हैं कि आज के टाइम में जो भी काम हम कर रहे हैं इसमें नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में ये सारी चीजें आपको फंडामेंटल लेवल पे पढ़ाया जाएगा। That's all. I just want to I would like to switch on the mic to Dr. Reema Thareja. Over to you, ma'am. Thank you, sir. And besides this, computer networks may, if once you study computer networks, then like ma'am said, that if you have studied GE in the first year, then you must do it in the second year as well. And computer networks is basically the foundation course for cyber security, right? Cyber security, as you know, last week only we had a newspaper, 42% of Indians have already been victimized by cybersecurity. So, and in fact, jobs in this field are going to increase, and there are no, professionals are not available. There is so much lack, and our students who are in this field, cybersecurity, they get a starting package of 6 lakh. So that in fact, this is the main domain that people are looking for. And even a BA, BCom or any graduate student, non-CS student can easily pursue a career here, because there are some tools, like you can go for ethical hacking. You can crack a password. Of course, this is we'll be doing it for a good cause. And then you will know cryptography. Again, each and every unit, if you're interested in that, you will be covering 6 units basically. And even if you have interest in one unit, you can pursue your career in that unit. And of course, if you do G for the 4 semesters, you can go for masters in computer science. I'll quickly show you the syllabus if you want. It is very interesting to see. Is my screen visible? Yes, you can know what form of cyber attacks can happen. See, whether you are a CS student or not, whether you are studying it as a GE or not, but I think this is mandatory for us to know. The external attacks that can happen, how you can protect it, what are the laws that protect us from such an attack, what we can do, then about some ethical hacking usage and password cracking tools. Like we see, it's even sometimes we put a password on a file and we forget ourselves how to retrieve those passwords. Then we will talk about different ciphers, encryption and decryption. For example, if I have to send you a very important message, I cannot just send you like that. I will put it in another form. So, for example, if I have to say the word hello, I will not say write hello, because somebody can see this. I'd rather write, I can write EOHOL, something like that, so that the correct message is, or I can write it like this. But why I'm writing like this needs to know by the sender and the receiver, so that only few legitimate people can understand this. So here are all the things that we will be covering. It's a very interesting project. And then, of course, it opens a lot of job opportunities. So what are network attacks? How can you gain access to another network? Then what are the security schemes? How can you implement firewalls? How can you generate an alarm when an attack is being created? So everything will be covered. Then the Indian IT Act. What are the punishments for what crime? And actually, we don't even know what a crime is. You won't believe, even if you see your friend's phone without his or her permission, that is a cyber crime. So, and in fact, you know, all the crimes today are shifting towards cyber. Like if I steal your wallet, I'm so sorry, how much money I will get? Maybe few thousand rupees. But if I steal your password, your bank account password, I can quickly, in a minute, I can take out lakhs of rupees. So even the criminals are becoming smart. So you need to first know how to protect yourself. Then you need to know what are the steps you can take. And then if you are, you can go for cyber forensics. And every police department, including Pune Police Department, Aurangabad Police Department, Delhi Police Department, they have a separate cyber cell. And you would be surprised to know that they are calling students
from various departments, even BA program students, they are calling and to give free internship, 6 months internship, so that you can do it online, and they can recruit you directly after your graduation is complete. So I think it's you must go with it. These are the practicals that we will be covering. How to encrypt your messages, then how you can change a message. Suppose I'm sending one message to a bank account. How can you attack that message? You can you can take access to that message and change it. For example, if I say transfer money from my account to this person's account, you can change that message and write, instead of this person's name, you can write your name, so that the transfer is done to your account instead of the other person's account. So all those things are really interesting to know, and we're always there to help you, even to know the prospects after your graduation, and even where all you can study and how you can get a job. So that's all. In case there's a query, we will be answering. You can write on the YouTube link. Thank you so much, ma'am. Thank you, Computer Science Department. Now the next department is Economics. Economics. So I'll switch to English. Economics is here. Like Dipali, is she there? Dipali. Hello. Okay, fine. Okay, ma'am. So I'm gonna talk about the money and banking paper that we are having. So primarily, the paper is basically divided into 5 topics. In the topic number 1, we are having the creation, the concept, function, measurement, theory, and money supply determination, where we are referring to 3 readings: Bay and Jensen, Jadhav, and RBI report. Then there is topic number 2, where we are having financial institutions, market instruments, and financial innovations, which is primarily going to talk about the role of the financial markets and the institutions, and what are all the problems that are associated with it. So generally, we see that there is a lot of asymmetric information that is found in the banking sector and so on, and how the banks do deal with it, with the asymmetric information. How do they make the decisions on whom they are going to loan out the money and so on, for which we are referring to Mishkin and Akins, M.Y. Khan, and Bay and Jensen. And also we are going to talk about the adverse selection, moral hazards, and financial crisis in this topic. This topic is further divided into 2 parts. First one, as I said, that the first one is going to talk about the role of the financial market and institutions. Other one is the money and the capital market, where it is primarily talking about organizations, structures, and reforms of India. So also it's going to talk about the role of financial derivatives and the other innovations, where we are again referring to 3 readings: M.Y. Khan, Pole, and Febuzzi. So there are few chapters from Febuzzi, and it's actually very relevant. Then we will have the topic number 3, where we are going to talk about the interest rate. Hello. I think somebody is unmuted. Then there is topic number 3, which is going to talk about interest rate determination and sources of the interest rate differentials, theories of term structure of the interest rate and interest rates in India. Again, we are referring to 2 readings over there, Bay and Jensen. So Bay and Jensen seem to be intersecting with in a lot of topics, and it's actually very, very important reading. So here I am going to refer to the chapter number 10 in this particular topic. And then we have the RBI report of October 4, 2007. This report primarily talks about the internal study group to review the working of the marginal cost funds based on the lending rate system. Then we'll have topic number 4, where we are going to talk about the banking system. This topic is further divided into 2 parts. The first part is going to talk about the balance sheet and portfolio management. And the second part will be talking about Indian banking system, changing roles and structure, banking sector reforms. So in this further, 3 readings are referred, and 1 paper by the Sen Gupta and Vardhan, that is on the non-performing assets.
and then RBI reports, 2 RBI reports that we are referring for the prudential norms and Basel III in the international and the Indian context. Then we have topic number 5. That topic is primarily going to talk about the central banking and the monetary policy, where functions, balance sheet goals, targets, indicators, and instruments of the monetary control, then monetary management in the open economy, current monetary policy of India. All these things we are going to talk about, and this is a little wide topic that we are having here. We are having in totality we are having 7 readings here, and again Bain is intersecting here. Then we'll have Jadhav, M.Y. Khan, Pamidua's paper and RBI report of 2015-16, 2020 and 2021, and then monetary policy paper. So that's all we are going to do in the money and banking so far in this paper. Okay. So then Kalpana ma'am, yeah. So now next department is English. Yeah, so hi everyone. I hope I'm audible. Yes. Yeah, so hi everyone. I'm Nilza Angmo from the Department of English. I will be sharing this paper with Dr. Neeta Kumar. So this semester, the English department is offering Indian English literatures as its GE option. So in this paper, what you will be learning about is Indian writing in English, especially after the 1980s. And we'll be looking at the major contributions that Indian writers have made for Indian as well as global literary production. And we'll be doing a close analysis of some of the major works as far as Indian writing in English is concerned. And we'll try to explore modern Indian subjectivities, histories, and policies in this paper. Should I just share the syllabus with you? Just give me a second. So I hope my screen is visible. Yes, it's visible. Okay, so as you can see, you have 5 units. The first unit is and the second unit, both are novels. One is by R.K. Narayan called Swami and Friends. You might be familiar with his name. And the other one is Firdaus Kanga's Trying to Grow. Then you have Tara, a play by Mahesh Dattani in the third unit. The fourth unit has a couple of short stories, as you can see. And in the fifth unit, we'll be looking at and studying some of the poems by, all of these poets here, Kamla Das, Nazim Bisekil, and et al. So as far as, the requirement for this course is concerned, I mean, we are looking for students who are, confident and competent, proficient in the English language at least, because it can be, problematic if you do not have some level of proficiency. We are not going to be teaching you English language. We are going to be focusing on English literature in this paper. Connected to this is, the marking scheme. We will also be following the, university-wide standard for, marking that we do in English departments, which will be, between 40% to 75%. I hope you keep that in mind before you opt for this paper. That's all I have to share with you, and I hope to see you in class this semester. Thank you. Thank you. So now I request Hindi department to come forward and do the orientation, and the departments who are done with their orientation, please reply the queries related to your subject on YouTube chat. I have already shared the link in the Zoom chat box. Okay, now Hindi department. थैंक यू रेनू मैम. मैं हिंदी डिपार्टमेंट से डॉक्टर विभा नायक और मेरे साथ हैं डॉक्टर अंतिमा सिंह जी. तो इस बार हिंदी डिपार्टमेंट ने 2 ऑप्शन जो रखे हैं, उनमें से एक है हिंदी में व्यावहारिक अनुवाद और दूसरा है भाषा और समाज. तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं बच्चों कि अनुवाद का आजकल कितना महत्व है. मल्टीलिंगुअल एज में हम लोग रह रहे हैं
और यही कारण है कि हमें एक से ज्यादा भाषाएं आनी चाहिए और उनका अनुवाद में का जो उनका व्यावसायिक जो संदर्भ है उनसे भी हमें परिचित होना चाहिए। तो उसी लिहाज से जो ये पूरा सिलेबस भी बहुत अच्छे से तैयार किया गया है और इसमें जो आपको बताया जाएगा कि अनुवाद का महत्व क्या है, आप इसके बाद रोजगार की दृष्टि से आप के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है और अनुवाद किया कैसे जाता है, क्योंकि एक भाषा से दूसरी भाषा में केवल उस भाव को रख देना ही अनुवाद नहीं है, उसकी एक प्रॉपर टेक्निक होती है जिससे आपको परिचित यहाँ पर कराया जाता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी और अलग अलग क्षेत्र हैं अनुवाद के, जैसे आप देखिए बैंकिंग सेक्टर में अनुवाद होता है, मीडिया के क्षेत्र में अनुवाद होता है। अगर आप लोग जैसे न्यूज रीडर बनना चाहते हैं या फिर आप रेडियो के लाइन में जाना चाहते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर में काम करना चाहते हैं, तब भी आपको एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ यही सब कुछ आपको बताया जाएगा और देखिए इसमें 4 यूनिट्स हैं और इसमें आपको अनुवाद के अलग अलग टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा, कैसे अनुवाद किया जाता है, सरकारी ऑफिस में कैसे अनुवाद होता है, किस प्रकार से अनुवाद होता है। इसके अलावा आप साहित्यिक अनुवाद के अलग अलग प्रकार क्या हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी। और इसके बाद ये है कि आप बाहर भी अगर देखें तो इसे अनुवाद को सीखने के बाद, अनुवाद की एक बेसिक जानकारी के बाद आप बाहर से डिप्लोमा भी कर सकते हैं और उसके बाद कई जगह से इसमें अनुवाद में डिप्लोमा कराया जाता है, जो कि रोजगार की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी होता है, JNU से, IGNOU से और कई जगहों से अनुवाद में डिप्लोमा कराया जाता है और जिसके बाद आपको एक बहुत बढ़िया नौकरी प्राप्त हो सकती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इस बार का ये जो बताया है पूरा सिलेबस है, इसमें आप ये देखिए ज्ञान विज्ञान तकनीकी साहित्य क्या है, सामाजिक विज्ञान, ये सारी चीजें जो हैं वो अनुवाद के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें आपको इसके बारे में बताया जाएगा। और हमारा जो दूसरा विषय है वो है भाषा और समाज। तो उसके लिए मैं अंतिमा सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आपको इसके बारे में बताएंगी। थैंक यू विभा। मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और भाषा और समाज जो पेपर है उसको मैं पढ़ाऊंगी। मेरा नाम अंतिमा सिंह है और मेरे साथ शगुन मैम पढ़ाएंगी वाला विषय। तो भाषा और समाज में जैसा कि अभी विभा मैम ने अनुवाद के पेपर में बताया कि 4 यूनिट में बटा हुआ है आपका ये जो सिलेबस, तो भाषा और समाज भी 4 यूनिट में बटा हुआ है। और अभी जो मैं आपके सामने रूबरू हूँ और आप तक अपने विचारों को, अपना जो संदेश है वो पहुंचा रही हूँ, भाषा के माध्यम से ही हम बातचीत कर पा रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे जीवन में भाषा कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मानव की प्रगति में भाषा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया भाषा ने। और भारतेंदु ने कहा भी है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। तो इस तरीके से जो गांधी जी ने भी कहा कि हमारी जो भाषा है, यानी कि भाषा की आवश्यकता मनुष्य को उसी प्रकार से है मातृभाषा की आवश्यकता, जैसे कि एक शिशु को यानी बच्चे के शरीर के विकास के लिए जैसे एक शिशु को माँ के दूध की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मनुष्य के व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए हमें मातृभाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा और समाज जो पेपर है इसमें आप भाषा और समाज का अंतर संबंध भी देखेंगे और भाषा जो है वो हमारी कला, साहित्य और संस्कृति की वाहक भी है। और भाषा की आवश्यकता इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं उनके संजोए हुए जो ज्ञान है, जो संचित ज्ञान है, उनको हम भाषा के माध्यम से ही सुरक्षित रखते हैं और आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में सौंपते हैं। तो मैं एक बार आपको सिलेबस भी बता देती हूँ कि 4 यूनिट में हम लोग किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं करना है मुझे। तो इस पेपर में हम भाषा और समाज के अंतर संबंध को स्पष्ट
करते हुए भाषा और समाज के विविध पहलुओं पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, उसके साथ ही भाषा व्यवस्था और उसके विविध रूपों की जानकारी भी आपको दी जाएगी। साथ ही भाषा और समाज के विविध रूपों का अध्ययन करते हुए आपको ये बताया जाएगा कि समाज में आ रहे बदलावों को समझना भाषा के माध्यम से कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। यानी कि भाषा और समुदाय के बदलते हुए भारतीय परिवेश में भाषा का नया प्रयोग और उसका अध्ययन कितना जरूरी है मानव विकास के लिए, इस पर चर्चा की जाएगी। भाषा और जातीयता के विविध रूपों का विश्लेषण भी किया जाएगा। इसके साथ ही द्विभाषिकता और बहुभाषिकता के विविध रूपों से भी आपको अवगत कराया जाएगा और उनका संदर्भगत विवेचन भी किया जाएगा। भाषा और संस्कृति के मूल बिंदुओं पर भी गहराई से प्रकाश डाला जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको भाषा के संबंध में आने वाली समस्याओं का निवारण मैं और शगुन मैम कर सके। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आप पढ़ने के लिए आएंगे क्लास में तो बाकी डिटेल में आपको ये बताया जाएगा। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात पूरी कर चुकी हूँ। धन्यवाद। Thank you, Hindi department. Next department is history. Thank you, Renu. Good morning to all and welcome, girls. I'm from the history department. I'm Ritu Bhagat, and my colleague Dr. Sonu Kumar Gupta is also here with us. Let me first share the papers that history department is offering as GE options. We are offering two papers. One is Making of Post-Colonial India, and the second is Politics of Nature. Let me just explain what will be the format of this paper. And for that, I'll also tell you that in your next semester, you will be studying Inequality and Difference with Sonu Kumar Gupta. And I will be another teacher will be taking Religion and Religiosity. So these are broadly the papers that you will be doing for if you opt for history as your GE options. Now, as far as the papers that are being given this semester, Sonu will explain the paper that he's taking, which is Politics of Nature, and I will be taking the paper on the making of post-colonial India. So I will share also, I'll try and share the syllabus also with you. The paper, as the name suggests, again, is something which is very contemporary, very relevant for what is happening in our nation today. As you can see, the broad rubrics that are explained here, I hope it is visible, explains the making of the Constitution and the linguistic reorganization of states as they exist in our nation today, the economic development, the 5-year plans, and the kind of uneven development that has taken place because of certain reasons, because of the colonial rule. We will try and see and understand and trace the roots of this uneven development. India's foreign policy, non-alignment, which has been a major aspect of our foreign policy, and the growth and development of various political parties. You know, we are going to discuss the politics since 1947, the major political party, which is the Congress Party, till 1977, and the kind of change that came about, a dramatic change that came about in the politics of India after 1977. We'll try and understand the reasons behind it, the left parties, the growth of left parties, and BJP, and even regional parties like the DMK and Shiv Sena. So this will give you a very broad understanding of the kind of developments that are
taking place today, and you will be able to understand why, what was the reason why this kind of developments took place or are taking place now. So Indian politics and society, we are talking about caste politics, the Mandal Commission, women and their rights, and the rise of BJP, the right-wing politics. We are talking about environment, we are talking about people's rights, civil society, we will be discussing about judiciary, civil rights, and interestingly, we will also be talking about media, the press, cinema and television, modern Indian art, and sports and the modern nation. So this is these are the broad rubrics that will be discussed in this paper. Depending on the strength of the class, usually teaching is bilingual. हिंदी में भी आपको बहुत सारा रीडिंग मटेरियल इसमें मिलेगा। और आज हम जब आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ओपिनियन, आपके चारों तरफ एक इंफॉर्मेशन की जो भरमार है वो आपको चारों तरफ से मिल रही है, तो उसमें आप किस तरह से ओपिनियन में और हिस्टोरिकल फैक्ट्स में डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरह एक क्रिटिकल एनालिसिस, एक क्रिटिकल थिंकिंग माइंड आपका एक सिटीजन का जो होना चाहिए, आप उन कर्तव्यों को भी अच्छे से निभा सकेंगे अगर आप अपने इतिहास को और अपनी इस धरोहर को समझेंगे। सो आई होप दैट मोस्ट ऑफ यू विल join our history department, opt for history as GE paper, and we look forward to having you as our students. I would like to now request Sonu to take over and explain his paper. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. I'm Sonu Kumar Gupta, and I will be taking GE paper, Politics of Nature. Basically, a politics of nature paper is a environmental history paper, or nowadays we all know that a big issue in our society that the how resource management. तो बेसिकली पेपर जो है वो रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में है। नेचर को हाउ जो नेचुरल रिसोर्स है उसको मैनेज किया बाय स्टेट और ह्यूमंस द्वारा। तो इन दिस पेपर जो है वी स्टडी अबाउट द हाउ स्टेट मैनेज एनर्जी प्रोडक्शन, प्लांट एंड एनिमल ट्रांसफर, सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज एंड पीपल, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है। तो इन इश्यूज के बारे में हम डील करेंगे। बेसिकली इन्वायरमेंटल हिस्ट्री लास्ट फ्यू 4-5 डेकेड से जो है ये पॉपुलर हुआ है, और इट्स प्रोवाइड अ डिफरेंट अप्रोच टू एवेलुएट ह्यूमंस एक्टिविटीज। तो देन उसके लाइक आप कोई भी स्टेट फॉर्मेशन में नाउ देयर मोस्ट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दैट द इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ हम इसमें बच्चे ये भी समझ पाएंगे कि हाउ जो इकोलॉजिकल आर्कुलेशंस जो क्या है ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज इंक्लूडिंग क्लास, कास्ट, जेंडर, इथनिसिटी, नेशनलिटी। और क्योंकि लाइक अ कास्ट सिस्टम नॉट ओनली अ सोशल, आप देखेंगे कास्ट सिस्टम जो है नेचुरल रिसोर्स को भी मैनेज करता है। अपर क्लास, अपर कास्ट या प्रिविलेज क्लास जो है उसके पास मोर एक्सेसिबिलिटी होती है। तो इसके साथ साथ जो है हम ये भी देखेंगे कैसे मिस मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो एक बिग इशूज है। आप देखें कि मोस्ट जो फर्टाइल लैंड्स हैं वहां पे प्रॉपर्टी है, गरीबी है। इसके साथ साथ देखिए जहाँ पे डैम है, जहाँ पे कोल माइनिंग्स है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है, वो एरिया बहुत ज्यादा गरीबी। तो ये ऑल प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ आज ये वर्ल्ड लेवल पर जो है एक कार्बन एनर्जी रिजीम जो है वो एक डिबेट का इशू बना हुआ है। तो इस पॉलिटिक्स ऑफ नेचर में जो है इन इश्यूज को कैसे मैनेज किया जाए, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है वो आप देखेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इन
इस पेपर में जो है आप बहुत कॉमनली आप देखेंगे कि कैसे जो है वेरियस टाइम्स हमारे सराउंडिंग इकोलॉजी जो है वो चेंज होती है। लाइक अगर आप देखें दिल्ली में अगर आप हैं तो जो ब्लैकबेरी है, आप इंडिया गेट गए और बहुत सारे जामुन के ब्लैकबेरी के पेड़ देख रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये ओरिजिनली दिल्ली का प्लांट नहीं है। आप होल जो आप रीज एरिया देख रहे हैं वहां पे रीप्लांटेशन हुआ, ये ओरिजिनल नेचुरली जो ग्रो हुआ था रीज एरिया पे, उन प्लांट्स को आफ्टर 1857 जो है ब्रिटिशर्स ने रीप्लांटेशन किया। तो इस तरह के बहुत सारे, इसके साथ साथ इसमें आप देखेंगे कैसे डिजीज एंड माइग्रेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म के अंदर में। आप देखेंगे कि आज जैसे कोरोना आपने देखा, कोरोना के इस डिजीज से पहले भी बहुत सारे डिजीज हिस्ट्री में आए हैं, तो उससे आप एक लर्न कर सकते हैं कि उस समय क्या हो रहा था। इसके साथ साथ आप बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना जो है फॉरेन जो कंट्री है वहां से आया ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम। लाइक आप पोटैटो देखते हैं, टमाटो देखते हैं, इस तरह के बहुत सारी चीज नेचुरली हम मानते हैं कि हम ये हमारे ही कंट्री का है, हम लोग रोज इसको यूज करते हैं। लेकिन जो है ये सारी चीजें पोर्तुगीज के द्वारा लाया गया। तो इस होल पॉलिटिक्स में जो है एक तो बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज है कि आपकी सराउंडिंग जो फ्लोरा फौना ये सारी चीजें हैं वो कैसे चेंज हुई वो आप यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल है या इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे जो है जेंडर में फीमेल और अनदर जो डिप्राइव कास्ट है उसके पास एक लिमिटेड एक्सेस है। तो होल ये पेपर बेसिकली नेचुरल जो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है उसको डील करता है। अब इसका बेनिफिट्स क्या है बेसिकली, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज एक बहुत बड़ा इशू जो है इन्वायरमेंटल इशूज है और ह्यूमन कैसे हाउ ह्यूमन इम्पैक्ट टू इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट कैसे ह्यूमन को इम्पैक्ट कर रहा है। इसके साथ अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये एक इमर्जिंग एरियाज है रिसर्च के लिए एंड अनदर जॉब के लिए भी। आप अगर फॉरेन में और इन सब से जाकर अगर आप पोस्ट मतलब डॉक्टरल पीएचडी या रिसर्च करना चाहते हैं तो एक इमर्जिंग एरिया है और इस पे बहुत सारे जो ग्रांट्स जो है वो आपको अवेलेबल है। रिसर्च के लिए भी इसमें बहुत सारे जो है ये नया न्यू फील्ड इमर्ज हो रहा है। तो ये आप दो मेजर इसके बेनिफिट्स हैं। इसके साथ साथ आप आज देख रहे हैं एवरी गवर्नमेंट और ऑफिसेज में जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेकर चीजें प्रमोट की जा रही है। तो इन फ्यूचर में जो है इस इश्यूज को, क्योंकि विदाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व किए आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को जो है इन सभी इश्यूज को जो है हम इस पेपर में डील करेंगे और एक अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी जो है हम वर्ल्ड के सामने रखें और इसके लिए हम पास्ट से क्या सीख सकते हैं, पास्ट से क्या लर्न कर सकते हैं। तो ये ऑल दीज जो थिंग्स हैं वी कंसीडर इन दिस पेपर। ओके, थैंक यू। Thank you, History Department. Next is Maths Department. Am I audible, ma'am? Yes, sir. You are audible. Okay. I am Pradeep Kumar on the behalf of Department of Mathematics. My video is visible? No, it's not. Okay. Yes, sir. On the behalf of Department of Mathematics, welcomes to all my colleagues and my dear student. Miss Alka Goel is also with me. Today, I will deliberate the idea why we study the mathematics as a generic elective subject. Firstly, I will tell you about the generic elective subjects offered by the generic elective papers offered by the Department of Mathematics. Ma'am, my screen is visible? No. मैम आपको एबल करनी पड़ेगी, एक्चुअली मैं स्क्रीन विजिबल करना चाहता हूँ।
Okay, I have a presentation. हाँ सर ठीक है, 1 second, अब करके देखिए. Okay, ma'am. Sir, screen is visible. Okay, ma'am. 1 second. हाँ, but got hanged. I think it is visible now. Yes sir, yes sir. Now this is all about my orientation. Now generic elective of papers offered by the Department of Mathematics. So there are 2 papers in the semester 3rd, namely as GE3, and in the semester 4th, namely as GE4. The paper name of GE3 is differential equation. This paper is with practical also. Similarly, the paper name of GE4th is numerical method. This paper is also with practicals. Now, this is the third paper and its structure. The paper name is differential equation, and total marks of in this paper is 150. In the theory, we have 100 marks. In the practical, we have 50 marks. And there are 4 lecture in the theory and 4 lecture in the practicals. Total credit of this paper is 6. In the theory, we have 75 marks for the university examination and 25 marks for the internal assessment. Similarly, in the practical, we have 25 marks in the university examination and 25 marks for the internal assessment. The total duration of the university examination of this paper is 3 hours. Now, similar structure of the GE4, the paper name is numerical method. This paper is also having 150 marks total. And in theory, this paper having 100 marks, and in practical, this paper having 50 marks. And this similar to the GE3rd, this paper having lecture 4th and practical 4, and total credit of this paper is 6. And again, in the theory, we have 75 marks for the university examination and 25 marks for the internal assessment. And in practical, we have 25 marks for the university examination and 25 marks for the internal assessment. And duration of this paper for the university examination is 3 hours. Now comes over the aims and objective for this generic elective 3rd and generic elective 4th. So now generic elective 3rd, this course include the variety of method to solve the ordinary and partial differential equation with basic application to the real life problem. It provides the solid foundation for further in mathematics, science, and engineering throughout mathematical modeling. In GE4, the goal of this paper is acquaint student various topic in numerical analysis, such as a solution of nonlinear equation of one variable and more variable also, interpolation, approximation, numerical differentiation, integration, or direct method to solving the system of linear equation, or numerical solution to solve the ordinary and partial differential equation with the help of computer algebra system. Actually, computer algebra system is a software, and our department offer the Mathematica as a computer algebra system. Mathematica is a very strong software. If you use the Mathematica, then you will feel that it is a very strong software. This is not a software which is used in mathematics, even it is used in other subject also, like social science, physics, chemistry. Now comes over the syllabus of GE3rd. So GE3rd, namely as differential equation. In the unit 1 of GE3rd, we have differential equation of first order and first degree. And in the unit 2, we have linear differential equation with constant coefficient. And unit 3rd, we have partial differential equation. And the main references for this paper is Kringzig, Irwin, and Mentiu, Ten, and Debonath. Now the detailed syllabus of the posted at the Delhi University site, and this is the link for the site for the detail of the syllabus.
Next, syllabus for GE 4th is numerical method, and in the unit 1 of this paper is method to solving the transcendental equation and method for solving the system of linear equation. Then unit 3rd, interpolating polynomial, and unit 4, differentiation and integration. Now the main references for this paper is Iyengar and Iyengar, and which is namely as numerical method for scientific and engineering computation. Now detail of the syllabus for this paper is also posted on the website of Delhi University, and link is here given. Now the application of these two papers in the higher education. So higher education, the opportunities of the higher education, we have with these two papers, we can do the master in mathematics and actuarial science, and these papers are applicable for the master in computer application, MCA, and mostly computer student knows that MCA entrance included 90% of the paper mathematics. Similarly, you can go for the master in business administration, that is MBA. Now career opportunity for these two subjects in academic like us, and civil services, banking services, you know that all the banking exam including the mathematics as a main paper. And if you want to go for the industries, so in the industries you go as a research analysis, climate analysis, forensic analysis, or the population ecologist. So these are the main career opportunities for the students who takes the mathematics as a subject. But except these opportunities, other opportunities are open for the students who takes the mathematics as a subject, like medical field, because I am also working in the medical field like biomathematics. So therefore I will tell you about that the opportunity, except these other opportunities also open. Now thank you. Now one of the important remark for these two papers, just see. Can you see that? Yes, sir. Okay. If you see this slide, so if the students are aspiring for the civil services main paper, if you take main paper as a mathematics, so main paper having a total marks is 250, in which the total question is 8. Only out of 8 you have to attempt the 5, and only the differential equation involving the 2 or 3 question in that main paper. Last 10 years से यही trend चलता आ रहा है. तो आप if you want to clear your main paper taking as a mathematics, so differential equation G third is your as a paper, which is a very important paper to attempt the civil services exam if you take the mathematics as a main paper. Thank you. Yes, as Pradeep sir has already told in detail about all these two papers. So there may be many students who couldn't opt for mathematics as their main subject. So this is a good opportunity for them to study mathematics as GE. So it is difficulty level is not as much as in core mathematics. It is very basic mathematics, and it is all about how to apply mathematics in real life. So mainly we convert real life problems as differential equations, and then we solve them using various methods. So both these courses offer these different methods to solve many differential equations. So mainly it is based on numericals. In this paper, we will mainly use differential equations to various methods to solve numericals. So it will be really helpful for all of you to study these two courses. Thank you. Thank you, ma'am. Philosophy department. Yes. Am I audible properly, ma'am? Yes, ma'am, you're audible. Okay. My name is Monica Shivare, and in the philosophy department, we are offering paper Feminism in the 3rd semester. This is an article-based paper which will be provided by the teacher in both language, English and Hindi.
And this paper arms the student with analytical skill to develop valid argument to counter gender discrimination, sexism, and patriarchal dominance. And it addresses the corners of women in terms of debates on consciousness and soul, analysis their connect with nature and culture. It also explains the development of feminist ideology. In a simple language, feminism is about gender equality. It's not about hating man, and it's not about matriarchy. It's not about women being better than men. Nowadays, problems like gender discrimination, domestic violence, male dominance, sexual harassment ruin women's life, career, and personal relationship. So that's why nowadays feminism is worthy of examining and highlighting. ये जो पेपर है ये नारीवाद जिसको हम हिंदी में भी बोलते हैं, और बच्चे बहुत इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ इस पेपर में हम बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो फेमिनिज्म के बारे में जो मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर करेंगे, बिकॉज वी आर लिविंग इन पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है. एंड अगर हम सब टॉपिक्स की बात करें तो लाइक वी विल डिस्कस इन दिस पेपर like the issue of gender in parenting, widespread myths about feminism, gender discrimination and sexism, way of achieving total gender equality, or many controversial issues of feminism. And if I talk about syllabus, so as I said, it is article-based syllabus. There are total 4 units, and each unit has 2 topics. So like unit 1 is like patriarchy and the origin of feminism. तो इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि पूरा पेट्रियार्कल सिस्टम कैसे डेवलप हुआ और उसके डेवलप होते होते फेमिनिज्म की रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ी. देन सेकंड यूनिट फेमिनिज्म एंड इंटरसेक्शनैलिटी. इसमें हम पढ़ते हैं कि फेमिनिज्म, जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा कि फेमिनिज्म कैसे रिक्वायर्ड हुआ, तो सेकंड में वो कैसे स्टैब्लिश हुआ. और देन थर्ड यूनिट बॉडी एंड जेंडर, क्योंकि हम सब जानते हैं इन द फेमिनिज्म द मेन इशू इज अबाउट जेंडर रिलेटेड इशू, और बहुत बार जो फीमेल की बॉडी को लेके एक्सप्लॉयटेशन होता है या जो कंसेप्शन बनते हैं उसके बारे में क्लियरिटी चाहिए. एंड द लास्ट यूनिट इज वुमेन एंड इन्वायरमेंट. इस यूनिट में हम पढ़ते हैं कि विमेन और इन्वायरमेंट का रिलेशन क्या है. जैसे जैसे इन्वायरमेंट डिके हो रहा है, कैसे विमेन का एक्सप्लॉयटेशन भी कैसे बढ़ रहा है. सो अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो देयर आर टोटल 8 टॉपिक इन दिस पेपर, और बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है क्योंकि हम जो इश्यूज डिस्कस करेंगे वो हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है. Now, in the 4th semester, we are offering the paper Bioethics. It is also article-based paper, and it is career-oriented curriculum, which enables the student to develop competence in policy making and participation in ethics committee of various medical and care institutes. Bioethics is a branch of applied ethics that study philosophical, social, and legal issues arising in medicine and life science. And there are many ethical issues which are part of the subject matter of bioethics, which deals with the ethical dimension of new development in medicine and biological science, like surrogacy, euthanasia, abortion, cloning, sex determination, autonomy, consent and informed consent, है ना, etc. तो आप देख सकते हैं कि bioethics is a very very broad subject, और ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरी में से पढ़ रहे हैं. हम ये सारे इश्यूज आज के टाइम पे हम कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं. आप देखो कितने सारे टॉपिक्स पे मूवीज पे बनती हैं, यूथेनेशिया में, क्लोनिंग में, सरोगेसी में, तो हम कनेक्टेड हैं. तो और दूसरा इसका अगर हम सिलेबस देखें तो इसके सिलेबस में भी देयर आर 4 यूनिट,
And again, each unit has two topics. The first unit is defining bioethics. In this unit, we will discuss the background of bioethics, the establishment of bioethics, introduction, etc. And in the second unit, the core concept like personhood, consent, informed consent, autonomy, privacy, confidentiality, ये हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. Then third unit, ethical dilemmas. Ethical dilemmas के अंदर हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसके लिए हम ये क्वेश्चन रेज करते हैं, is it morally justifiable or not, like abortion, surrogacy, euthanasia, cloning, कि क्या ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हें हम नैतिक दृष्टि से एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं. And the last unit is person and lives. So in this unit we will discuss the value of life, कि क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हम लाइफ को डिस्कस करते हैं, हमारे माइंड में पर्सनहुड का क्या मतलब है, कि व्हाट मेक्स पर्सन, एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, क्यों सेक्स डिटरमाइन किया जाता है और हम पर्सन को कैसे इजिली किलिंग तक पहुंचा देते हैं, ये सारी चीजें हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे. अगेन ये पेपर भी बहुत इंटरेस्टिंग है. क्यों? क्योंकि हम इसमें जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ से बहुत कनेक्टेड है और हम उन्हें एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं. स्पेशली आप जब जाओ किसी हॉस्पिटल में तो आप देखो कि जहां हम बात करें सपोज कंसेंट एंड इन्फॉर्म कंसेंट, तो कितनी बार होता है कि आपको अच्छे से बैठ के पूरा टर्म्स एंड कंडीशन समझाई जाती है. बहुत रेयर होता है. आपको जल्दी जल्दी एक फॉर्म दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इस पे साइन कर दीजिए, और बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती पेशेंट या उसके रिलेटिव्स को. तो ऐसी कई चीजें हैं जो हम इस पेपर में डिस्कस करेंगे और उन प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन ढूंढे उस प्रॉब्लम का, दैट वी विल डिस्कस. एंड अगेन द रीडिंग are available in both language, Hindi and English. So thank you so much. Thank you, ma'am. Next is Political Science Department. Yeah, thank you, ma'am. Hope, am I audible? Yes, yeah. Yeah, thank you. A very good afternoon to the students. I'm going to talk about GE paper for political science. The students who are going to opt political science, they have to study in this semester Understanding Ambedkar. The paper name is Understanding Ambedkar, and in the next semester they'll be studying United Nations and global politics. This paper is a quite different one, and the way we study political science, in this paper, we'll study one thinker from various perspectives. Actually, this paper was designed in a way to introduce students for a textual study and also to erase various misunderstandings which we have about Ambedkar. So, for example, we normally know that Ambedkar was a Dalit leader. He worked for the emancipation of Dalits, and he was also the drafting committee chairman of Constituent Assembly. So, but the reality is much more than this reductionist view that he was merely a scholar or a leader of downtrodden and contributed for the making of Indian Constitution. So this paper actually offers you his entire horizon in terms of his thoughts regarding not only Dalits, not only about caste and constitution, but it actually gives you a wider philosophical view of Ambedkar, his thought about various other issues, which is very less known to the students. And those are economy, class question, sociological interpretation of religion, gender, caste, cultural issues, also about his ideas on politics, concepts of nation, state, democracy, law, and constitutionalism. So in all these domains, Ambedkar has given a very important contribution. He has given theoretical as well as philosophical
ideas about in these contexts. So student will have opportunity to critically engage with a thinker. So they'll have a very different approach to understand one thinker, how a thinker was actually thinking about his own time. So ऐसा आपको एक opportunity मिलेगा कि आप एक thinker कैसे सोचते थे, that you have to you will be learning here. इसमें जो syllabus है that has 6 parts, 6 units. So the first unit is approaches to the study of polity, history, economy, religion, and society. Here you will study this unit from 2 perspectives. One, how to study these domains and how to study these domains through Ambedkar, and how Ambedkar was thinking about these domains. So ये larger theoretical पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा कि सोसाइटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, रिलीजन एंड पॉलिटी के बारे में अंबेडकर क्या सोचते थे ओवरऑल. एंड देन सेकंड जो इसका यूनिट है कास्ट एंड रिलीजन, in which you will study caste, untouchability, and critique of Hindu social order, also about religion and conversion. Third unit is women's question, in which you will study rise and fall of Hindu women and Hindu Code Bill. The fourth topic is political reason, that consists of nationalism and nation, democracy and citizenship. Fifth is constitutionalism, rights and representation, constitution as an instrument of social transformation. And the last section is about economy and class question, that consists planning and development, land and labor. So this looks a very small syllabus, but you will have various different understandings of Ambedkar, and that will actually erase your misunderstandings about Ambedkar. For example, we know that he was very much concerned about the emancipation or development of scheduled caste or the people from backward classes. And for that, he went for embracing Buddhism. So many of us think that he was a critique of religion, and he was critique of Hindu religion also. But in reality, we will see while reading this paper, we'll understand how he was close to religion, and he was not anti-religion. His main purpose was to actually annihilate the caste, and therefore he was not entirely confined his entire attention in the abolition of caste system, but he also talked about women. He was the first person who talked about the rights of women, and he whatever the rights we have now for women, almost most of the rights like marriage, divorce, property right, all these rights were proposed by Ambedkar in the Constituent Assembly, and later it was compiled as a Hindu Code Bill. And so these are his contribution. He was actually a person from economics background and law background. So there are many things that we'll be studying about Ambedkar in this course. So this is a syllabus. This gives you a small glimpse about this course. How we have well-developed course material both in Hindi and English. Hindi English दोनों में आपको material और package इसका बना हुआ है. Most of the writings of Ambedkar in English, they are available on website. You will also get audio visual sources like YouTube link and secondary writings. Enough writings and enough resources you have to study this course. The class assignment and test, of course, will do that, but a little different thing we'll be doing in this class, as a student will have opportunity to prepare PPT and present in the class. Also, they'll be encouraged to learn how to write their assignments in an academic way. So those things you'll have opportunities to learn in this class. And you will also learn here how to
implement or how to connect the ideas what Ambedkar was thinking about the society and connecting it to the contemporary situation. So it's not about that we are going to study only ideas of Ambedkar, but their relevance in the contemporary time or present time. So this connection you will learn in this paper. So this is a brief about this course. Yeah, thank you. Thank you, sir. Pol Science Department. Now I'll request Physical Education to have their orientation. Physical Department, Physical Education. Thank you so much, Renu ma'am. Good afternoon to everyone. Myself, Dr. Kavita Vats from Department of Physical Education and Sports, and my colleague, Dr. Kumari Seema, also with us. So now in third semester, we introduce the paper of aerobic training. The name is very clear. In this paper, we have theory plus practical part. In this theory part, we have 3 units. And in the first unit, we have learned about the introduction of aerobics, importance of participation in aerobics, and the individual and group training related with aerobics, and the form of aerobics like floor aerobics, step aerobics, aqua aerobics, etc. After that, we have appropriate aerobic gear, floating equipments, and we also learn about the need, benefits, and selection of music for the aerobics. इस पेपर में आगे हम डेवलपमेंट ऑफ एरोबिक फिटनेस प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ते हैं, और ये सारी ही चीजें साथ के साथ हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई हैं. तो प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स है वो एज इट इज इसके साथ साथ चलता रहेगा, जिसमें जो थ्योरी पार्ट हम पढ़ेंगे उसको हम एज अ प्रैक्टिकल ग्राउंड में भी परफॉर्म करेंगे. एरोबिक्स इज अ कार्डियो एक्टिविटी. बेसिकली ये हमारी फिटनेस के लिए, हमारी पर्सनालिटी के लिए और हमारी एक स्किल एनहांसमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है. हम इसमें प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज के बारे में भी पढ़ेंगे. इसका बेसिक जो पार्ट है वो हमारा पर्पस है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपनी फिटनेस को लेकर इसमें पार्टिसिपेट करें, और जो बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, दोनों ही कंडीशन में बच्चे इस पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं. दिस पेपर इज ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश. हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये पेपर जो है अवेलेबल है. नोट्स सब आपको क्लास में ही प्रोवाइड कराए जाएंगे और प्रैक्टिकल आपका ग्राउंड में कंडक्ट होगा. ठीक है, तो इसमें ज्यादा वरीड होने की कोई टेंशन ही नहीं है. 100 मार्क्स का पेपर है, and we have 50 marks theory and 25 marks of internal assessment and 25 marks of external practical. So thank you so much. You must of this paper. Thank you, Physical Education Department. Now I request Sanskrit Department, and this is the last department for GE. After this, we are going to start the SEC, and the SEC session will be taken over with me by Akash and Mansi Malik from Geography Department. And now I request Sanskrit Department to have the orientation for their subject. नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत क्लियर है. जी जी जी, सभी को नमस्कार. मैं संस्कृत विभाग से ऋषिराज पाठक हूँ. मैं आपके समक्ष जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जीई लेंगे, उनके लिए हमारे संस्कृत विभाग से जो पेपर उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसके विषय में मैं बताऊंगा. हमारे विभाग द्वारा थर्ड सेमेस्टर में इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी इन इंडियन सोशल थॉट, ये वाला पेपर कराया जा रहा है. इस पेपर में हम व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में, परिवार के बारे में, समुदाय के बारे में, जो भारतीय चिंतन परंपरा है, इंडियन जो थॉट प्रोसेस है, उसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ने का प्रयास करेंगे. इसमें जो मुख्य विषय हैं वो आइडिया ऑफ पर्सन, पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल, आत्मा, इंद्रिय, मन एवं बुद्धि के विषय में हम पढ़ेंगे. इसके अलावा जो योग है, योग को आज के समय में हम योगा के रूप में जानते हैं. ये योग जो है वो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. श्रीमद् भगवद गीता में योग के 4 अलग अलग प्रकार हैं, जैसे भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है. इस प्रकार ये जो 4 अलग अलग योग के प्रकार हैं, इनके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे, और ये किस प्रकार मनुष्य के जीवन को विकसित करते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कैसे कर सकते हैं, इसके संबंध में हमें योग से क्या क्या सहायता मिलती है, हमारा आत्मबल कैसे बढ़ सकता है,
आत्मविश्वास कैसे बढ़ सकता है, यह तथ्य हम इसके माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। मानव जीवन के जो लक्ष्य हैं, जैसे धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये व्यक्ति के संबंध में बात रही। परिवार के संबंध में हम प्राचीन भारत में संयुक्त परिवार की क्या अवधारणा रही है, उस विषय में हम अथर्ववेद का टेक्स्ट पढ़ेंगे। और विवाह में जो जो प्रतीक होते हैं, भारतीय संस्कृति संस्कार प्रधान संस्कृति है, यहाँ विवाह भी एक धर्म विधि है, एक लॉ है, धार्मिक रीति से संपन्न होता है। इसमें जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जो जो भी यहाँ अनुष्ठान होते हैं, उनका क्या क्या प्रतीक है, उनका क्या क्या महत्व है, सामाजिक दृष्टि से उसका क्या महत्व है, ये सब हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, हम सभी इस 21वीं शताब्दी में हैं और आज के समय में नारी सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। रामायण काल में सीता निर्वासन एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी मुद्दा है। इस विषय पर हम मधुकिश्वर का लेख और वाल्मीकि रामायण के संदर्भ पढ़ेंगे और हमारा इसका ये मुद्दा रहेगा कि सीता निर्वासन क्यों हुआ, सीता को वन में क्यों निकाला गया, नारी की क्या अस्मिता रही है, आइडेंटिटी ऑफ वुमेन का क्या मतलब है रामायण काल में। और ये बहुत ही रुचिपूर्ण मुद्दा है और इस पर हमारी छात्राएं खुलकर पहले भी बात करती थीं और अपने विचार प्रकट करने के लिए हमारी छात्राएं स्वतंत्र हैं। यह पेपर केवल पुराने पूर्वाग्रहों को पढ़ाने के लिए नहीं है, हमें स्वतंत्र चिंतन का अवकाश देता है। और अंत में ये प्रकृति और मनुष्य का परस्पर संबंध क्या है उस पर केंद्रित है और बहुत ही सुंदर यह पेपर है। मैं जो संस्कृत ऑप्ट करेंगे, जो संस्कृत जीई लेंगे, उन छात्राओं को ये सूचित करूंगा, ये बहुत जरूरी बात है कि हमारा यह पेपर संस्कृत से भिन्न विद्यार्थियों के लिए है। इसीलिए यहाँ हिंदी में अथवा अंग्रेजी में भी आप परीक्षा में उत्तर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको संस्कृत में ही उत्तर लिखने हों, आपको हम अंग्रेजी माध्यम से, हिंदी माध्यम से नोट्स उपलब्ध कराएंगे और आपका अध्यापन भी कराएंगे और आपको जो भी संस्कृत का टेक्स्ट होगा उसको ट्रांसलेशन के साथ हम महत्वपूर्ण संदर्भों के साथ उसको हम आपको पढ़ाएंगे। वो बहुत अधिक नहीं है, 2-3 विषयों में ही है और परीक्षा में आप स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। जो संस्कृत पृष्ठभूमि के नहीं भी हैं उनके लिए भी यह पत्र बहुत उपादेय है, परीक्षा में लिखने की दृष्टि से या विषय समझने की दृष्टि से। हाँ, इस विषय से आपको संस्कृत भाषा तो नहीं, किंतु संस्कृत में निहित जो साहित्य है उसका अवश्य ही परिचय होगा। अब मैं जो हम 4th सेमेस्टर में विषय आपको देंगे उसके विषय में संक्षेप में बताऊंगा। ये पेपर है एंशिएंट इंडियन पॉलिटी। एंशिएंट इंडियन पॉलिटी मतलब प्राचीन भारतीय राजनीति। भारतवर्ष जो है वो अत्यंत प्राचीन देश रहा है, अन्य देशों की अपेक्षा इसकी प्राचीनता निस्संदिग्ध है। भारत की प्राचीन परंपरा में समाज का क्या स्वरूप था, राजनीति का क्या स्वरूप था, इस विषय को हम इस पेपर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जो विद्यार्थी इतिहास पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी समाज शास्त्र पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी हिंदी भाषा पढ़ते हैं या जो भी भारतीय परिप्रेक्ष्य को किसी भी दृष्टि से पढ़ते हैं, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो भारत की प्राचीनता को जाने। भारत की प्राचीनता में भारत के प्राचीन समय में क्या सभ्यता थी, कैसा समाज था, कैसी राजनीति थी, किस प्रकार की धार्मिक विधियां होती थी, इन सब के विषय में विस्तार से जाने। वह सारा का सारा विषय इस पेपर के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। इस पेपर में प्राचीन भारतीय राजनीति के संबंध में राजनीति के भिन्न भिन्न नाम जैसे दंड नीति, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस या दंड नीति या राज्य का क्या प्रकार हो सकता है, उसका क्या स्वरूप हो सकता है, और प्रॉब्लम्स इन इंडियन पॉलिटी, जो हमारे राजनीति में जो समस्याएं रही हैं उन पर भी बात करेंगे। हमारे यहाँ निर्वाचन की परंपरा पर बात करेंगे कि राजा का निर्वाचन होता था। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के निर्वाचन करने वाले लोग हुआ करते थे। हमारे यहाँ न्याय कैसे होता था, जस्टिस के विषय में पढ़ेंगे। कर व्यवस्था, टैक्सेशन के विषय में पढ़ेंगे। कौटिल्य जो चाणक्य है, उनका जो अर्थशास्त्र है, जो आज से 2200-2300 वर्ष पहले लिखा गया था। आप ये समझ लीजिए कुल मिलाकर कि अशोक के समय से, जो सम्राट अशोक है मौर्य काल के, मौर्य युग के समय से लेकर उससे प्राचीन समय की पूरी राजनीति और उसके बाद की करीब करीब 800-900 वर्षों की जो राजनीति है उसके हम महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। इसमें सप्तांग थ्योरी आएगी, इसमें जो हमारा सिद्धांत है, मित्र का सिद्धांत है, अरि का सिद्धांत है, शत्रु का सिद्धांत है,
मित्र का सिद्धांत है, पड़ोसी राज्य के साथ कैसे व्यवहार करने चाहिए, टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, कर व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये वाला पेपर भी जो राजनीति के विद्यार्थी हैं, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, या जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, या जो विद्यार्थी IAS की तैयारी करने में रुचि ले रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अत्यंत अनिवार्य है। अगर ये पेपर पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सी यूनिट उस विषय में क्लियर होती जाएंगी। तो मैं इस पेपर के बारे में भी बताऊंगा कि ये पेपर भी आप संस्कृत में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं परीक्षा में, अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं। संस्कृत में प्रायः कोई लिखता नहीं है क्योंकि संस्कृत बैकग्राउंड नहीं होता विद्यार्थियों का, तो आप हिंदी में और अंग्रेजी में लिख सकते हैं। आपको हम इन दोनों ही भाषाओं में इसके महत्वपूर्ण नोट्स, संदर्भ, टेक्स्ट उपलब्ध कराएंगे और आपकी हर प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये दोनों पेपर मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, sir. Now we are done with the GE orientation. There is something Miss Kalpana ma'am wants to tell about the economics paper. So I'll just ask her to wind up the things in 1 or 2 minutes. Kalpana ma'am, you there? Hello, am I audible? Yes, yes. Okay, so from our department, economics department, we are offering actually 2 papers for GE. First one, like Dipali ma'am has already discussed about money and banking. So that is for your 3rd semester, money and banking. Students who are opting for money and banking, they have to opt for public economics in 4th semester. So second choice for GE is your Indian Eco. So Indian Eco is divided into 2 parts. 3rd semester you have Indian Eco 1. 4th semester you have Indian Eco 2. So basically money and banking Dipali ma'am already have told you about the paper. So I'll be just giving you a brief intro about Indian Eco. As the paper name itself is like very common topic, Indian Eco. So first in 3rd semester, it will be more about looking at the economic indicator. Like we'll be talking about growth and development, in particularly looking at the population growth. Then you are looking at the inequality. Then we'll be looking at the unemployment and like poverty. This all topic we will be discussing in a 3rd semester, basically looking at all the economic indicators. So second part of Indian Eco, which will be in a 4th semester, will be morely discuss about the policies of a different sector. A sector in the sense we'll be talking policy in a macro level. Then we'll be talking in a like agriculture sector. Then we will be talking about in industrial sector, and last one like talking about the service sector. So this is how like Indian Eco is divided into 2 parts, which first one will be in 3rd semester and second one will be in a 4th semester. That's all I just wanted to tell about the second choice for GE in economics. Thank you, Kalpana. Thank you. Thank you so much. Now I request Mansi from Geography Department to answer the general queries. Most of the queries has been answered by the respective departments on YouTube chat, but there are certain general queries. So Mansi, those queries which are not answered, please answer those queries. And at 12:40, we are going to start with our next session, which is related to your SEC. Okay, ma'am. Good afternoon, everybody. With regard to the queries that we have received, one query pertains to the difference between GE and SEC. Students are asking about if they can choose their same discipline as GE. Although Renu ma'am has already clarified, but I would just like to point out that GE is something that you take apart from your main discipline. If you are doing computer science honors, you cannot take computer science as your GE, but you can take CS as your SE. You will anyway study CS as your SEC. So please be very clear that general elective papers are those that you choose apart from your discipline. And the benefit of choosing GE for 2 years is that you can pursue this discipline for your master's degree. One more question pertaining to GE is regarding the regarding a minor degree. As far as we know, there is no concept of minor degree in DU right now, that if you pursue GE for 1 year, you are provided with a minor degree.
So I think there is a misconception pertaining to that. So I would request the faculty members to please clarify this with the students, that there is no minor degree being offered to students if they study GE for 1 year. Students, if they want to, the benefit for studying GE for 2 years is that you can pursue a master's course. And that is why faculty members on YouTube have also requested students that in case they wish to pursue master's degree, they should continue studying GE, the same GE for 2 years. However, it is not mandatory that you study the same GE. You can always switch your GE in the next year. So in the first year, if you have taken one GE paper, you can always change the GE paper in the next year. There is no hard and fast rule to continue with the same GE. So these are some queries that we have come through. In case students have any more queries, please feel free to contact us over email. Also, we would be sharing the Google form for filling the options after the orientation. So Renu ma'am will share the form with all the TICs, and that can be subsequently shared with the students. Thank you, ma'am, and thank you, everybody. Now we are starting with the another session, and thank you everyone for telling each and every of our students so briefly and so acutely सारी चीजें detail briefing करने के लिए. And those who are done with the orientation can leave this meeting of the GE. Now, those faculty members who are going to do the orientation regarding SEC papers can only be with us. Thank you for joining this session with us. And thank you so much, Akash and Mansi, for handling the first session. In second section, Akash is going to be with us from Geography Department. So, regarding this, I just want to brief the GE students that in the beginning, we have given the introduction related to your GE papers. For SEC papers, the basic introduction. Mansi, you there? Yes, ma'am. That is what I was about to say, that I have the PPT with me. I'll share it for you. Yeah. So Mansi is going to share the PPT. I just want to have a brief intro about the SEC papers. So, ma'am, can you see the screen? Yeah, first screen is visible. Okay, so I will start the slideshow. I don't know why is it. Leave it, Mansi, just switch to the slides. So the very first slide is regarding this SEC paper. See, SEC is the paper which you study among your disciplines. Among your disciplines means like if you are having a discipline of pol science and history. So the SEC you can choose is pol science and history only. Besides that, there is a choice. If you don't want to study pol science and history, then you can go for any language paper, which is Hindi and English. Okay, understood? This is for program only. For honors, the SEC is handled at the department level. So we are not doing anything for the honors SEC. We are only and only concerned with the SEC with the BA program students. And the last date for filling the form is same as of your GE, which is 18th of August 2022. We have given all the things that there are minimum 4 options which you have to fill mandatorily. The option cell locations will be as per your preference filled in the Google form. We are going to give the allocation on the preference of the student, which is there in first preference list. But in case we are not able to allocate the subject, we will then go with the second choice of the paper which is filled by the student. The allocation criteria is the first come first serve basis, means the student who has filled the form previously or the first basis, unko hum pehle form ko process karenge. The students who have filled the form late will give the preference as per the requirement of the rules and regulations. Next thing, it's not thinking like if you have filled the 4 options, mandatorily you are going to get that thing only. That is again depend upon when you fill your Google form. Next, the PDF of that form, Mansi.
I request department as well to go through this PDF form, because these forms has the paper's name, which is given by the options which are filled by the respective departments. In case there is any issues or any corrections, please let us know. Ma'am, shall I stop sharing? इसको stop करके मानसी एक बार वो PDF दिखा दो form का. हाँ जी ma'am. We are showing this PDF form to the faculties and the students so that in case there is any query by the students, so you also have a knowledge about the context or the parameters which we have asked in the Google form. So this is for the SEC only. The form is same for GE and SEC students, and it is bifurcated on section wise. So as soon as the student fill the option, like whether she is filling for GE, it will move you to the GE SEC options or GE options of papers. If the student fill the SEC option, then it will take you to the SEC options of those papers. So as I told earlier also, that you need to fill 4 different order of preferences, and those 4 options are mandatory to fill. SEC option will only among the disciplines which the students is admitted into. In case she doesn't want to study those subjects, then she can go for any language, which is Hindi and English. So in case you have a discipline Hindi and English, please select the paper wisely, because then you are not going to then you don't come to us like, ma'am, we have the already studying English as our discipline, and then we have chosen English also, then there are duplication of the papers. So please go through the syllabus very cautiously. Next, Mansi. This one is your email registered with the college. Second, student college roll number. Then the format will be your year of enrollment and your roll number, 4-digit roll number. For example, 20 is your year of enrollment, then oblique your 4-digit roll number, which can be 1111. Okay. University exam roll number, not university enrollment number. University exam roll number. Then your full name, then your mobile number, again registered with the college. Next, your course. In case you are opting for BA SEC, then you have to select BA program. The form itself will take you to the question number 11, which is related to your SEC paper options. This one is for GE, not for you. This one is your 11th question. Here, first question will be related to your discipline. Okay, many times it happens students select their discipline presuming that this is the choice which they want to study. No, it's not. Here you have to take the discipline in which you are admitted into. As I said, Pol Science and History. So Pol Science will be your first discipline and History will be your second discipline. Now question number 13 will be related to the course which with the subject which you want to study. For example, you want to study any paper, then you have to select this. This history is offering 2 different paper. In your form, you will have this paper as 2 options. Okay, so heritage and tourism is 1 paper, and introduction to art in the Indian subcontinent will be the another choice. So you have to choose any one in first option. Next, and this will be repetitive in further 3 options. All the options are mandatory, so you need to fill all the 4 options. I think we are done. After that, you need to press submit button and your entry will be recorded with us. Now I'll hand over to the departments to come over and take the orientation. Akash, you there? Anyways, let's start with the departments. I request Eco department to have the orientation. Yes, ma'am, sure. Thank you. Hello, everyone. So Department of Economics will be offering in the 3rd semester, Understanding Economic Survey in Union Budget. Ma'am, can you just confirm, am I audible? Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay.
So, so in your discipline course, paper 1, paper 2, so you have studied microeconomics and you would be studying macroeconomics in the second year. So microeconomics, macroeconomics, the things that we have studied theoretically, now there is one practical paper where we would be studying 2 documents of the government, which is economic survey and union budget. So as we know that there's enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. And we keep talking about scarcity in economics. Now, similarly, when we are deciding about how to allocate the budget of a country, so we have a lot of money collected through taxes and through various other avenues. Now, how that money should be distributed among the areas that we need to develop. Say, for example, we have education, we have health, we have pressing problems of poverty, we have infrastructural issues. We have so many issues around us. Now, what issue should be given what amount? So in the union budget, we see what all amount of money that we are collecting from various sources, the revenues of the government. And we also seeing that how government allocates that revenue to different expenditures. So budget is like a statement of the government where they decide how to allocate the money collected to various avenues. And we will see that what are the ways they do it, how they do it, how they go about it. So a budget starts getting prepared way too early than it is presented. So what are the things that they keep in mind? Who are the stakeholders whose information we need to collect? Who are the people who are going to benefit from it? What are the areas that we need to emphasize? So union budget talks about the statement of revenues and expenditures of the government. And we also look at previous budgets and the budgets that are coming up. But we will have main focus on the budget that is going to be prepared now. So we will be starting the budget. And the second part of this paper is economic survey. So survey, as the name suggests, survey means that you're surveying, that you're seeing what is happening. So in economics, economic survey means that you're surveying the country, like what is happening in the country. So there are various things that are being developed, that are becoming problem areas, that are improving, that needs urgent attention. So we are doing a survey of the economy. We are doing a survey as in the health sector, in the education sector, in climate sector, what all things need attention, what is happening, what has happened in the last year, which needs, like, say, for example, we could pick up some issue like female employment, and we will see what has happened in the last year. So we will study a few topics in economic survey. We will not be studying the whole economic survey because that's a very big document and we do not have the wavelength to cover the full economic survey, but we will be picking up the major topics, the more important topics, so that you have an idea that what all things we are surveying. Surveying means that you're seeing what is happening, that you're seeing what is happening in the economy. So we will pick up some topics. Say, for example, we will pick up climate, we will pick up employment, we will pick up some issues that we feel are more important, as in making the syllabus. And then we will also study budget. So these are the two documents that we're going to study. It's a practical paper in the sense that you have whatever theoretically you have understood in microeconomics. And I think Iti ma'am, you're okay. Yeah. So this is a kind of a practical paper in the sense that whatever you have studied theoretically in microeconomics, macroeconomics, in the topics that you have seen in a theoretical model manner, now you will be applying it on the practical ground and seeing that how do we really address the problems of the economy. So this is a relevant paper in the sense that if you want to really understand, if you read newspapers and you read that the budget allocation has been this, but so sometimes you hear that India's budget allocation for health is very less. India's budget allocation for education is very less. So if it is less, then why is it less? Where else have we devoted our money? What is the problem that we're facing? Because at the end of the day, we have scarcity. We do not have so much money that we can spend on all things we want. So we have to choose which things we want to spend on, which are more priority, which are not so priority. So this is something that we will understand in budget and survey. This is a paper which is more like you have to read. In budget, you will have to read the statement and understand it. And in the survey, you would have to read what is happening in the economy, what has happened in the last 1 year. So
if you have studied microeconomics, macroeconomics, micro you would have studied and macro you will study in second year. So you would know that the model that you have done, now you will be applying it. So as far as the level of the rigor of this paper is concerned, the rigor of this paper is not so much, but it requires dedication in the sense that you would have to carefully read the document, you have to carefully understand, you have to be regular in classes. So it's not that easy that you can just pass it very easily. You would have to put dedication to it. If you are putting dedication, it is very easy paper. And it would be followed up in the 4th semester by research methodology. So Amulya sir will be talking about it. And this is about this paper. Thank you. Ma'am, I'm done. I think now Amulya sir would be speaking. Sir, you are not audible, Amulya. Yes. I'm audible. I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. I'm audible now. Yes, sir. Hi everybody. Okay. So I will teach research methodology as SEC paper in 4th semester. As Pallavi has already said that the budget survey in 3rd semester, and it is interlinked to the research methodology. In this paper, we'll study how to do research. Okay, how to collect data. Data analysis, little bit of data analysis. Okay, so I will suggest that those. So you are not audible. There is some technical issue. So I request you to explain the paper after computer science department. Now I request computer science department to have the orientation. Computer science department. Hello. So next department after computer science. Okay. No, sir. I'm audible. I think some network problem is there. Sir. Now it's fine. Now it's fine, sir. Okay. So I have already discussed that what are the major course curriculum No, sir, it's not. Sir, sir, the voice is breaking a lot. Nothing is audible, sir. So, in after computer science or after some departments, sir, please let us know whenever the network is fine. Okay, sir. So, students, ECO has 2 papers. So, both the papers are there. In case of any query related to ECO, please write in the chat box. Anyone from computer science department? No? Then I request English to start with the orientation. English department. Yeah, hi, good afternoon, everyone. I am Iti Sharma from Department of English, and I'm here to talk about the papers that we have to offer to the SEC English students. So in the 3rd semester, we have this paper called English Language Teaching that you also know as ELT. And this particular paper, through this paper, we aim at developing and polishing the pedagogical skills in our students. And we will be here in this paper, we will be discussing and deliberating on certain important theories, some teaching methods,
some teaching approaches which are pivotal and a prerequisite for the teaching of English language. And by the end, the student should be able to recognize the various aspects and variables. For example, the individual differences in the learners, like age or maybe social economic background, their proficiency level, and the expectations and needs of learners. So they should be able to identify all of them. This paper has been divided into 4 units. Let me share the screen. Yeah, I hope it's visible. Yes, it is. Yeah, thank you. So we have this paper divided in 4 units, and the very first unit is English language teaching. So it will acquaint the students with certain theories and like Bloom's taxonomy, and also the variables that the student should be able to recognize in the learner, like age, gender, and the proficiency level, what motivates them, etc. And then we also have some modern approaches to teaching that we will be discussing in detail. And the second unit will be about structures of English language. So it is really obvious that when we set to teach something to something to someone, we will obviously have to be acquainted ourselves with the basics of the language. So here in this unit, we will be discussing about the structures of English language that will involve the study of phonetics and morphology and syntax. So, and then in the unit 3, we will be we will be studying about the methods and practices and the materials. So we will be here talking about the teaching the listening skills and speaking skills, reading skills among the learners, vocabulary, writing skills, grammar, etc. And then in the 4th unit, we will discuss how to assess the learners based on certain things like tests. We can assess them by taking tests, and how we can address the errors, the basic errors in the language. Okay, so these are the things that we are going to study in the 3rd semester under the paper English language teaching. Now, let me share what we have to offer in the 4th semester. That is the paper called Translation Studies. And in this particular paper, see, we all are aware of how this phenomenon of translation, it has become indispensable, and the importance of translation in today's times, how it bridges the various cultures and countries. So here we will have a detailed study about translation, and it is further divided into some 5 units. And the very first unit will be introducing the very concept of translation to the students. And here we will be talking about certain elements and certain terms and concepts which are related, associated to translation, like source language, target language, etc. And in the second unit, we have the brief theory of linguistics. So we again have the morphology, phonology, syntax, etc., including the process of translation as well. And in the 3rd unit, we will talk about in detail, we'll talk about the types and modes of translation. So how we can translate in various ways depending on the context, how we can translate a certain material from one language to another, depending on the context, that will decide on our type of translation. So we can, for example, go for the literal translation or semantic. We can go from free sense to literary translation. So everything will be discussed in detail in this particular unit. And in unit 4, we will have the practical application of
whatever we study till unit 3. So we will practice, we will engage our students into the practicality of this particular theory. The theories, the various theories that we will learn in all the units 1 to 3, we will put those theories into practicality. We will have some practical application of all those theories. And then in unit 5, we will discuss what are the issues prevailing in the translation process. For example, we have the gender issue in translation. We have the caste, the culture, and we have further technology and translation, how they are linked, how they are related to each other, and then translation and mass communication. And then we have, in the end, comparison and evaluation of translated texts. So they will all be discussed in detail and practiced well. So it will be really fun for the students to engage themselves into this process of learning as well as application of this learning. So that's all that I wanted to talk about. I hope to see you soon. Thank you, everyone. Thank you, English department. Now I would like to request FT department to brief the students about the ACC. Yeah, hello. Hello to everybody. Please stop sharing, English department. Stop sharing your slides. Yes, ma'am. FT department. Yes, so I'm Mamta Marva from the Department of Food Technology here to orient our BA program students that have opted for food technology for the SEC papers that they can further opt for. I'll say it right in the beginning that our papers of food technology SEC are open only for our own food technology students. And, you know, if they take up the SEC of the 3rd semester, they can carry over in the 4th semester too. The 2 SEC papers that we are offering are in the 3rd semester, it is confectionery technology, which I think is a very exciting paper. It runs parallel or rather complementary to the other food technology papers, the main paper that they would be studying. And this confectionery technology basically focus on sugar cookery. So we are going to be, you know, you're going to be learning about the principles of sugar cookery, which will include telling you about the types and different kinds of sugars that are there, how they are processed, and what all we can do with that sugar once we start processing it. So this will lead to, you know, the different kind of candies that can be prepared out of sugar. Again, you know, we have the crystalline and the non-crystalline candies. You know, we're going to be talking about making of fondants, fudges, and brittles. I will not elaborate on what these are. I would like these to be the things that excite you, that you know, make you want to go ahead and join up for this SEC. So you're going to be studying about the different kind of candies, fondants, fudges, brittles, and we'll be making some of our regular Indian you know, items also, which involve playing with the sugar. You know, for example, there is Shakkarpara, there is Chena Murki, there is rock candies, there are chocolates. So we'll be making different kinds of candies and toffees, and we will also be checking them, you know, for their qualitative assessment. We'll be evaluating them, you know, as to whether they're meeting all the criteria of, yeah, you know, food standards. Another very interesting thing that you will be doing here is learning all about icing of cake. Now, that is part of your main paper also, and here you would be doing it in a focused manner where you will learn the different kind of icings, you know, with which the cakes can be decorated, and which, according to my experience, is always a huge hit with the students. And apart from cake icing, we'll also be making different kind of chocolates. You know, and this will be not only playing around with the ingredients, it will be learning all about
how each of that ingredient is processed, how it is made suitable for making that particular item. We'll also study about the different equipments that are required, all the other cooking processes, and at the end of it, you will feel competent enough to start making these at a professional level. This will help you become entrepreneurs in the field of confectionery, and it will be complementary to the basic baking technology paper that you would be studying as your main paper. I would also like to reinforce here that we have a beautiful lab that is very well equipped, and you will be doing hands-on experiments there. This is a practical paper. You would be coming for your classes 4 times, for 4 classes per week, and you would actually be doing, preparing the candies, preparing chocolates, preparing, confectionery items, decorating them, and, enjoying at the same time. We have, the reference materials and all are plentiful available. As I said, the lab is fully equipped, and we are waiting to welcome you to join up for this program. This was confectionery technology that FT offers in the 3rd semester. Then when we go over to the 4th semester, the food technology offers a paper of nutrition and well-being. All of you would be familiar with the basic concepts of nutrition and how it is, very, very important for maintaining our well-being, for, having that, for that feeling of wellness. And so you will be learning the basics of meal planning. So, so in a family, there are elderly people, there are young children, there are people of different age groups, as well as different income levels. So you will be learning the basics of meal planning in this particular paper. Side by side, you will be learning how to prepare nutritious snacks. So whenever, the requirement of nutrients go up, we always try to add some snacks to the diet apart from the main meals. And those snacks are, are really helpful in fulfilling the gap in nutrition. So you will be learning how to prepare nutritious snacks, and, you will become familiar with the food composition tables, which I think all of us should be familiar with, wherein we realize or find out as to which nutrients are particularly present in a particular food. So therefore, if the doctor has advised you to take a particular nutrient in larger amounts, or you have been asked to omit a particular nutrient from your diet, you are familiar with all the nutrients and you are aware of the food sources. So that, I think, is a very important aspect of this particular paper. So you will be learning, you will be identifying the food sources. Then you will also learn how to do a research work by, getting hands-on experience of a 24-hour dietary recall. So here you will be able to calculate exactly how many calories, how much protein, how much, calcium or iron or other important minerals you have consumed in the past 24 hours. And you will be taught how this 24-hour dietary recall works, and you will actually be doing it for your own selves. Then again, as I said earlier also, that you will be doing meal planning with the help of the food exchange system. Now, these food exchange systems are universally used, a concept in India, and we will be using these food exchanges to prepare a meal plan for, let's say, an elderly, or for a preschooler, or for a lactating mother. So, that will be there. You will actually be preparing these, some of these foods and some of these snacks that you calculate for and prepare and, plan out. As I said earlier, you have a lab, beautiful lab, in which you will actually be preparing these products and, getting more familiar with them. Then also you'll be studying about the nutritional labeling of food products. Now, we are consuming a whole lot of products out of supermarkets. Packed foods are there. There are frozen food. So, how to read a label is very, very important, because as educated consumers, we need to be absolutely sure of what we are consuming, and whether, that there is something in that
that we are not supposed to be consuming, or it is contraindicated. Maybe we have some allergies. So it is very important to be able to read the labels of any item that we pick up. And you will also learn exactly how to do nutritional labeling, that exactly how much calories, how many protein, how much of other micronutrients are available in that particular food product. Now, well-being also means that we have our weight under control, we have our parameters right, and therefore in this paper you will also be learning how to estimate the BMI, which is body mass index. So whether you fulfill, whether you are in the okay category or you are in the obese category. So it's a very simple calculation, and you will learn how to estimate the BMI as well as few other parameters of nutritional status that you will learn about. This paper actually in a nutshell tells you about nutrition, and I think everybody should have this knowledge because it helps them to lead better, healthier lives. So so this is exactly what you're going to be doing in your SEC in your 4th semester, nutrition and well-being. Both these papers are practical. You'll be doing file work, you will be doing cooking, you will be actually estimating the principles, the approximate principles in the lab. And I feel that both the students as well as the teachers have a great time in these SEC papers. So I welcome you all to take up this SEC in the 3rd semester as well as the 4th semester. And as I'm repeating once again, that this paper is open only for students who have opted for BA program food technology. Thank you. Thank you, ma'am. Now I would like to request the geography department to brief the students about SCC papers. Hello everyone. I'm audible to all of you. Hello. Yeah, you're audible. You're audible. So I am Arif Hussain on the behalf of Department of Geography. I'm going to introduce our ACC paper. Our department offers basically 2 ACC paper. In 3rd semester, we offer regional planning and sustainable development, and in 4th semester, fundamental of remote sensing and GPS. So can I share my screen, Akash? Yes, you can. Yes, you can share. Screen. I think now my screen is visible to all of you. Yeah, it's pretty clear. So we offer basically 2 ACC papers in 3rd semester and 4th semester. In 3rd semester, I have already told that regional planning and sustainable development, and in 4th semester, fundamental of remote sensing and GPS. So first, I would like to introduce ACC paper ACC paper fundamental of remote sensing and GPS. So this paper basically is all about the remote sensing and remote sensing technique. Remote sensing technique is all about the basically collection of data of the Earth surface. Remote sensing basically collect data of the Earth surface without coming in its physical contact, in which we use basically different sensors for collecting data of the Earth surface, like data related to land use, land cover, data related to water body, data related to coastal area, data related to settlements area. So we can say that remote sensing technique is data collecting
tool. It's just a data collecting tool. So you can see here for course objective, what actually we are going to learn in this paper. The basic objective of this paper to learn about the remote sensing technique and learn about the aerial photography, its basic principles, types, and satellite remote sensing. तो जो रिमोट सेंसिंग और जो जीपीएस है, जीपीएस हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। हम अपने मोबाइल डिवाइस में बिना जीपीएस के हम आज की डेट में किसी को लोकेट नहीं कर पाते। हमें कैब बुक करना है तो जीपीएस यूज करते हैं, ठीक है। स्विगी से कुछ हमें ऑर्डर करना है तो जीपीएस से हम ट्रैक कर पाते हैं कि कितने देर में जो है जो हमने ऑर्डर किया है वो डिलीवर हो पाएगा। ये सारी जो चीजें हैं पॉसिबल हो पा रहा है ओनली बिकॉज ऑफ यूज ऑफ जीपीएस। तो जीपीएस मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग टर्म यूज हुआ है जीएनएसएस। जीएनएसएस मीन्स ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। कैसे पूरा बेसिकली जीपीएस जो है फंक्शन करता है, तो उसी के रिगार्डिंग ये पेपर है। तो जो रिमोट सेंसिंग टेक्निक है आज के डेट में ऐसा आई थिंक कोई फील्ड नहीं है जिसमें रिमोट सेंसिंग टेक्निक जो है हम यूज नहीं कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड हो या ज्योग्राफी के फील्ड हो या अदर कोई फील्ड हो। रिमोट सेंसिंग का जो एप्लीकेशन है हर फील्ड में है। तो ज्योग्राफी में बेसिकली रिमोट सेंसिंग टेक्निक जो है हम नेचुरल रिसोर्सेज को बेसिकली कंजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो इस पेपर में हम इन सारी चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे हम रिमोट सेंसिंग टेक्निक को हम अप्लाई करके इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो और रिमोट सेंसिंग को हम हिंदी में बोलते हैं सुदूर संवेदन तकनीक। तो इस पूरा पेपर को अगर हम देखें कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं, तो सुदूर संवेदन तकनीक और विश्व का स्थिति निर्धारण व्यवस्था, जिसको जीपीएस हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो कोर्स कंटेंट है, देयर आर बेसिकली 5 यूनिट्स इन दिस पेपर। फर्स्ट यूनिट डील्स विथ डेफिनेशन, डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो बेसिक डेफिनेशन के अगर थ्रू हम देखते हैं इस पेपर को, तो बोल सकते हैं टू कलेक्ट डेटा of the earth surface without coming in its physical contact, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करें, फिर उसके जो डिफरेंट फेजेस हैं डेवलपमेंट के हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। देन प्लेटफॉर्म्स एंड टाइप्स, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स एंड टाइप्स मीन्स कि इसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम रिमोट सेंसिंग टेक्निक को यूज कर पाते हैं, ठीक है। देन टाइप्स में basically there are 2 types of remote sensing. First is active remote sensing and second one is passive remote sensing. So in first unit you will be learning about the basic concept of remote sensing, and in second units is all about the aerial photograph, principles of aerial photograph, types of and geometry of aerial photographs. In third unit it is all about the satellite remote sensing. Satellite remote sensing works on the basis of EMR interactions with atmosphere and Earth surface. So first we will be learning about the EMR, what actually means of EMR, electromagnetic radiation, and how it is used in remote sensing technique. Then we will also learn about the basically satellites and different sensors. In the syllabus there are 2 different satellites are given. First one is Landsat and second is IRS, Indian Remote Sensing Satellite. इन दोनों ही सैटेलाइट में डिफरेंट सेंसर्स यूज होते हैं, जो उसको भी हम इसमें कवर करेंगे। देन इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन, फोर्थ यूनिट जो है, फोर्थ यूनिट डील्स विद इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो जो इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन है वो बेसिकली लैंड कवर पे हम देखेंगे इसमें, जो फोर्थ यूनिट है।
और जो 5th यूनिट है जो बेसिकली हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से है, इसके प्रिंसिपल्स एंड यूजेस। ये पूरा कंटेंट है इस पेपर का, जिसमें हम पूरे 5 यूनिट्स को कवर करेंगे। रिमोट सेंसिंग जो पेपर है आज के डेट में इसका रेलेवेंट बहुत ज़्यादा है हमारे डे टू डे लाइफ में, कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में अगर हम देखते हैं तो अगर किसी को फ्यूचर में बेसिकली रिमोट सेंसिंग के फील्ड में करियर बनाना है या मैप डेवलपर बनना है, ठीक है, तो इस पेपर को आप चूज कर सकते हैं, आप आने वाले सेमेस्टर में ले सकते हैं इसे। दूसरा जो पेपर है हमारा रीजनल प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो रीजनल प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसमें हम बेसिकली सीखेंगे कि व्हाट एक्चुअली मीन ऑफ रीजन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजनल प्लानिंग, देन प्लानिंग रीजन, why we need a regional planning and how it works as a tool to reduce regional disparities। तो रीजनल प्लानिंग की अगर बात करें तो एक ये सबसे जो इसका यूज है रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने में। We will also learn why some areas of the world are economically backward and forward. What are the factors behind that? तो पूरे वर्ल्ड का जो रीजन है इसमें कुछ एरियाज जो हैं बैकवर्ड हैं, कुछ फॉरवर्ड है इकोनॉमिकली अगर हम देख रहे हैं तो, बट उसके पीछे कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स भी हैं जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया को फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स बनाती है। वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या हैं उसको हम इसमें लर्न करेंगे, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम किसी एरिया को बैकवर्ड रीजन और फॉरवर्ड रीजन के कैटेगरी में रखते हैं। और उस बैकवर्ड रीजन को जो हमारा जो फॉरवर्ड है वो तो है, जो बैकवर्ड रीजन है उसको हम कैसे फॉरवर्ड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस चीज के लिए हमें रीजनल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं इंडिया का या वर्ल्ड का, हम इस पेपर के थ्रू समझ सकते हैं और उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। फिर आते हैं कोर्स कंटेंट में। कोर्स कंटेंट देयर आर बेसिकली 5 units in this paper. First unit deals with concept, need and types of regional planning. तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है रीजन का, रीजन क्या है, रीजन्स आर ऑलवेज इन होमोजेनियस इन नेचर, ठीक है, जिसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन में कंसीडर किया जा सकता है। वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे बेसिस पे, किस बेसिस पे हम रीजनल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज के बेसिस पे अगर करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ही उसमें कंसीडर करेंगे, ठीक है, जैसे एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है, ठीक है, फिजियोग्राफिक डिविजन्स का जो हमारा पूरा इंडिया को हमने डिवाइड किया है तो उसमें हमने फिजिकल पैरामीटर्स को लिया है, तो ये इसमें समझेंगे। देन नीड्स एंड टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, नीड्स क्या है रीजनल प्लानिंग के। देन सेकेंड यूनिट डील्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिलिनिएशन ऑफ रीजनल प्लानिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिलिनिएशन ऑफ रीजनल प्लानिंग में जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है रीजन को उसको हम स्टडी करेंगे। देन रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया फॉर प्लानिंग। तो रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया फॉर प्लानिंग, तो प्लानिंग करने के लिए हमें सबसे क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे जोन में पूरे कंट्री को डिवाइड कर देंगे, जिसको हम रीजनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं, रीजनलाइजेशन का टर्म यूज करते हैं। देन मॉडल्स फॉर रीजनल प्लानिंग, देयर आर डिफरेंट मॉडल्स व्हिच आर यूज्ड in regional planning. For example, growth pole theory or periphery model and growth foci concept. तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट थ्योरीज हैं जिन्होंने डिफरेंट रीजनल प्लानर ने दिया किसी भी पर्टिकुलर बैकवर्ड रीजन को डेवलप करने के लिए। जो 5th यूनिट है बैकवर्ड रीजन्स एंड रीजनल प्लान्स, तो बैकवर्ड रीजन्स कौन कौन से है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके लिए क्या सुटेबल रीजनल प्लान्स हो सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्टेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है वो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्लान के कैटेगरी में है। तो ये पेपर काफी इंटरेस्टिंग है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें हम सीखते हैं कि जो पूरा रीजनल डिस्पैरिटीज हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, और उसको हम कैसे उस रीजनल डिस्पैरिटीज को जो डिफरेंट मॉडल है, डिफरेंट थ्योरी है रीजनल प्लानिंग में, उसको यूज करके कम कर सकते हैं। तो रीजनल डिस्पैरिटीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं अगर आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो, क्योंकि जो मास माइग्रेशन है, ठीक है, वो उसके पीछे जो फैक्टर है वो रीजनल डिस्पैरिटीज है। और रीजन इक्वली डेवलप हो तो जो माइग्रेशन है, इतना मास माइग्रेशन जो है हमें देखने को मिलता है इंडिया में, वो नहीं होगा। तो इस पेपर में हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे। जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे, ये दोनों ही पेपर जो रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस है और रीजनल प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, करियर अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत हेल्प करेगा आपको। इसमें अगर आप यूपीएससी ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं तो आप ये पेपर बहुत हेल्प करने वाला है। देन स्टेट पीसीएस में भी, एसएससी के एग्जाम में भी, फिर आपको रीजनल प्लानर बनना है, फ्यूचर में कंट्री के लिए प्लानिंग करना है या किसी भी अदर सेक्टर में प्लानिंग करना है, तो रीजनल प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पेपर है ये हेल्प करेगा। रिमोट सेंसिंग के थ्रू आप मैप डेवलपर बन सकते हैं और इस सेक्टर में आप अपना करियर सेट कर सकते हैं। तो ये दोनों पेपर है जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट जो है ऑफर करेगा 3rd and 4th सेमेस्टर में। So I think I'm done now. Thank you, Geography Department. Now I would like to request the Hindi department to take up the orientation, and I would like to request all the other departments coming up to only discuss the 3rd semester papers. Thank you. Hindi department. हाँ, मेरा नाम चारू गोयल, मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ। आप सभी का नमस्कार। जैसे अभी आकाश जी ने कहा कि केवल 3rd सेमेस्टर का ही डिस्कस करना है, तो हिंदी डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए सेक में 3rd सेमेस्टर के लिए रचनात्मक लेखन का पेपर लेकर आ रहा है। रचनात्मक लेखन को अंग्रेजी में अगर कहें तो क्रिएटिव राइटिंग। इस पेपर के 4 यूनिट्स हैं और चारों यूनिट्स में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस इसलिए दिखाई देगा क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग केवल एक क्षेत्र में नहीं है। आप क्रिएटिव राइटिंग आप मीडिया में भी दिखा सकते हैं। आप लिटरेचर के अगर विद्यार्थी हैं और लिखने का शौक है, पढ़ने का शौक है, कवि बनने का शौक है, तो वहां भी आपको रचनात्मक लेखन दिखाई देगा। आपको बच्चों के लिए जो लेखन होता है, बाल साहित्य जो लिखा जाता है, उसमें भी आपको रचनात्मक लेखन की जरूरत है। बेसिकली हम बहुत कुछ अपने आसपास देखते हैं और कभी बहुत शिद्दत से इतना महसूस करते हैं कि उसको कभी कभी हम लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अटक जाते हैं क्योंकि हमारे पास उस स्किल की कमी है जिसे हम रचनात्मक लेखन कहते हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग को लेकर रचनात्मक लेखन क्या है, साहित्य के लिए, बाल लेखन के लिए, सूचना तंत्र। आप जब भी अखबार के लिए लिखने लगते हैं तो आप जो डे टू डे नॉर्मल भाषा में जिस तरीके से बात करते हैं वो भाषा वहां पर इस्तेमाल नहीं होती अखबार में। तो अखबार की भाषा, अखबार में भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, इंटरनेट के लिए आप कुछ लिख रहे हैं तो अब तो हमारे पास ब्लॉग्स का भी एक पूरा संसार है। तो जहां भी आपको क्रिएटिव राइटिंग की जरूरत है उसके बहुत सारे हिस्से हैं जिसको हम रचनात्मक लेखन में पढ़ेंगे। रचनात्मक लेखन के लिए आपको भाषा की जरूरत है और भाषा के लिए आपको उसके मौखिक और लिखित रूप से रूबरू होना, उसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। मौखिक और लिखित रूप के कौन से अपने नियम हैं जिसको लेकर भाषा आगे चलती है और कैसे हम उसे रोजमर्रा की दैनंदिन जीवन की भाषा से अलग मानकर रचनात्मकता से किस क्रिएशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ये पेपर आपको ये चीज सिखाता है। ये पेपर यूनिट्स की तो आप देखिए 4 यूनिट्स में पेपर डिवाइड है। तो मैं बता दूं पहले रचनात्मक लेखन किसे कहते हैं, अवधारणा, स्वरूप और सिद्धांत, उसको पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में हम उसके रचनात्मक लेखन के आधार क्या हैं, अर्थ के आधार पर भाषा की कौन कौन सी भंगिमाएं हैं। आप कभी औपचारिक दृष्टि से बोलते, कभी अनौपचारिक दृष्टि से, तो उसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है वो बताया जाएगा।
भाषिक संदर्भ भी कभी कभी बदल जाते हैं, आप किस क्षेत्र से आ रहे हैं, आप किस वर्ग से आ रहे हैं, आप किस समूह से आ रहे हैं, उससे भी आपकी भाषा प्रभावित होती है। और उस जो प्रभावित भाषा है उसको रचनात्मक लेखन के लिए आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी जरूरत को, उसकी उपयोगिता को यहाँ पर बताया जाएगा। तीसरी यूनिट में आपको साहित्य की दृष्टि से, यदि आपको कहानी लिखनी है, कविता लिखनी है, नाटक लिखना है, उपन्यास लिखना है, तो कौन सी रचनात्मक लेखन की दृष्टि से जो जरूरी बातें हैं, सावधानियां हैं, वो आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। चौथा यूनिट सूचना तंत्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और विज्ञापन के लिए, अगर आप विज्ञापन के लिए कुछ रचनात्मक, विज्ञापन एक पूरा एक अपना इंडस्ट्री है जो केवल और केवल रचनात्मकता पर ही टिका हुआ है ना, तो उस पर बातचीत की जाएगी। तो ये रचनात्मक लेखन का पेपर है, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। और इसकी चौथी यूनिट में हम प्रैक्टिकल्स भी करते हैं कि आपने अगर समीक्षा लिखी, कोई रिव्यू लिखा, बुक रिव्यू लिखा, आपने फिल्म का रिव्यू लिखा, तो उसमें किन बातों की जरूरत है और किन बातों को आपको छोड़ना है, किन बातों को देखना है, वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है और बराबर आपसे इस बात की डिमांड करेगा कि आप रोज कुछ ना कुछ सोचे समझें, और इस जो आप कुछ पढ़ रहे हैं थियोरेटिकली और फिर उसको प्रैक्टिकली हम इसको पेपर को क्लास में बराबर करते हैं। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Ma'am, are you done? हाँ, हो गया आकाश। Okay, ठीक है। Thank you, Hindi department. And now I would like to request History department to brief the students. A warm welcome to all the students who have joined us today. I'm Nirmala Shah, and along with me, Dr. Kirti Anamika would be explaining the course. For this SSC paper, we are offering 2 papers. During this 3rd semester, we are offering Heritage and Tourism, and the other paper is Introduction to Art in the Indian Subcontinent. And in continuation with this, in the semester 4, we will be discussing Archives and Museum paper, and the other paper would be History and Archaeology. So first of all, I would like to discuss this Heritage and Tourism paper, which I will be taking along with Dr. Chainika Unyal. We are sharing the screen. This is the syllabus of this paper. Basically, this is very interesting paper, and as the title itself says, Heritage and Tourism. So we will be discussing about the rich heritage, not only of India, but across the world, and how the heritage is related to tourism. So the objective of the course is basically to enable students to understand the social, historical, scientific, aesthetic, and economic values. As we know that during the last quarter of the 19th century, that is during the colonial period, Indian artifacts gets museumized with coming of exhibitions, fairs, collections, setting up of the museums and botanical gardens. So you can see in your screen, this paper is divided into 4 units. First unit basically is Constitution of Heritage in Colonial India. It talks about institutionalization and commodification of Indian art and architecture, and in this we will be discussing some case studies from across the world. For instance, Great Exhibition of London, Kew Garden London, Indian Museum Kolkata, Tranquil Bar, guidebooks, the relevance of guidebooks and travel literature. The second unit talks about tourism, the marketing heritage. So moving to the contemporary times, to make this course more conducive to employment opportunities, the present day practices of marketing heritage are explored. So in this unit, religious tourism, whereby we will be discussing some case studies of Kashi, Ajmer Sharif, Amritsar, and related places. Memory and tourism, how during the colonial period, the indentured labor who have migrated to other countries, how they look into the tourism industry of India right now. The ecotourism, handicraft, heritage walks, tours, palaces, heritage festivals, all these aspects would be discussed. Then in unit 3, we will be discussing the sustainable
the sustainable tourism. How, when we undertake tourism, we need to take into care the local sensibilities. So for this, we will be looking into the case studies of Agra, Shimla, and Goa, and then how the conservation of heritage is undertaken. That also we are going to understand in this paper. And for this, we will be looking into the case study of Humayun's tomb and Ajanta caves. The fourth unit, that is the last unit, is based on the field trip and related project works, whereby we will be taking the students for some field work in any of the museums that is located in Delhi, or some heritage works, and you will be required to do some project or some report writing or some assignment based on the field trip which would be undertaken. So basically we can see that overall this paper is very interesting and employment generating, and the probability is that after completing this course you will be able to understand the intensities of travel and tourism and heritage studies. After understanding this paper in semester 3, we will be looking into, in continuation with this, in semester 4, we will try to familiarize with all of you, with all the students who would be taking this paper, with archives and museum. This paper is also very interesting, and I would not go into great detail of this paper, but it is very important to know that archives and museum, as we know that nowadays this archives and museum, it is situated in almost all the states, and then this paper would try to give you a glimpse into the functioning of both the museums and the archives, and again from the colonial period till the present times, and it is based on excursion to museums and archives, and you would be given some kind of training and instructions to understand how archives and museums function. So this was the first paper, or the first paper which we are offering. The second paper that we, the other paper which we are offering, Dr. Kirti Anamika would be discussing that with you. So I hand over the mic to Kirti. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. I'm Dr. Kirti Anamika from History Department. ये जो सेक पेपर है, ये आपका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू आर्ट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है आपका और सिक्का पेपर, क्योंकि आपके यूपीएससी के लिए भी बहुत हेल्प करेगा अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और इसमें आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है इंडियन आर्ट हिस्टोग्राफिकल इशूज। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है वो है स्कल्पचर्स, स्टोन स्कल्पचर, गंधारा एंड मथुरा, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, फर्स्ट और सेकेंड सेम में भी आप लोगों ने देखा होगा इसको और अच्छे से पढ़ा होगा। जो आपके डायनेस्टीज थी उसमें आपने गांधारा और मथुरा आर्ट को पढ़ा होगा। फिर मेटल आर्ट आता है जिसमें कि चोला ब्रॉन्जेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर टेराकोटा जो कॉन्टेम्परेरी है उसको डिस्कस करेंगे। फिर यूनिट थर्ड जो है आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, इसमें जो है टेम्पल्स, नागरा पैटर्न, द्रविडियन पैटर्न, जिसमें कि सन टेम्पल जो कोणार्क से रिलेटेड है, नटराजा टेम्पल चिदम्बरम में जो है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली आपका एंशियंट जो हिस्ट्री है उसका आर्ट इन आर्किटेक्चर, और जो मिडिवल हिस्ट्री है उसका आर्ट इन आर्किटेक्चर, देन मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसका आर्ट इन आर्किटेक्चर हम लोग इसमें, ये जो सेक पेपर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पेपर है थर्ड सेम के लिए बेसिकली। फिर आपका आता है मॉस्क, जिसमें कि कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क जो है दिल्ली में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और जो है इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ताजमहल, ताजमहल का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, जो इम्पोर्टेंस है, वो हम लोग जो है इसमें डिस्कस करेंगे। कुंभलगढ़ फोर्ट, और उसके बाद कॉलोनियल जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, जैसे कि राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली में है, उसको आप, उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर आप देखेंगे। और फिर विक्टोरिया टर्मिनस जो कि मुंबई में है, और इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका जो लास्ट यूनिट है वो है पेंटिंग। तो आप पेंटिंग में फिर वही ट्रेडिशन आएगा इन द सेंस कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो
पेंटिंग है, फिर आपका मिडिवल जो पेंटिंग है, या फिर मॉडर्न पेंटिंग है। इन तीनों पेंटिंग्स को आपको पढ़ना होगा। तो इसमें जो अजंता की जो पेंटिंग है, म्यूरल ट्रेडिशन, वो डिस्कस करेंगे। मिनिएचर ट्रेडिशन, मुगल्स एंड राजपूत्स को डिस्कस करना होगा। और फिर जो है नेशनलिस्ट ट्रेडिशन यानी कि बंगाल स्कूल को आपको डिस्कस करना होगा। और फिर है कॉन्टेम्परेरी ट्रेडिशन यानी कैलेंडर आर्ट। तो ये आपका जो है सिक पेपर ऑफर किया गया है हिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। बहुत सारा इसमें आपको नॉलेज मिल जाएगा अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत ही रिलेवेंट पेपर है आपका। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि आपको 4th सेमेस्टर में जो है हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी पढ़ाया जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे बताने नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये भी बहुत करियर ओरिएंटेड पेपर है। इसको भी आप जो है कभी टाइम मिलेगा तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Ma'am, please stop sharing your screen. Okay. Yes. Thank you, department. Now I would like to request the philosophy department to take over the orientation. Hello. Good evening, everyone. Nitanji Kaide, sir. Yeah. थर्ड सेमेस्टर Yes, फिलोसफी डिपार्टमेंट एथिकल डिसीजन मेकिंग जो पेपर है वो ऑफर कर रहा है। बेसिकली एथिकल थियरीज मींस एथिक्स से रिलेटेड जो भी आपका हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, कि जो डिलेमा होता है व्हाट ऑट टू डू, बेसिकली ऑट से रिलेटेड है, आपको क्या करना चाहिए एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या सही है क्या गलत है, मॉरल थियरीज के बारे में, जो कि जनरली हमें ऐसा लगता है कि ये थियरी सही होना चाहिए, बट उसके बारे में जब हम मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, एथिकली मॉरली वो सही नहीं है। अगर सिलेबस की बात करें फर्स्ट यूनिट 1 अगर हम देखते हैं उसमें है एथिकल थियरी, जिसमें ट्रेडिशनल एंड कंटेम्पररी थियरीज है, वर्च्यू एथिक्स, यूटिलिटेरियन एथिक्स, डिओंटोलॉजी। वर्च्यू एथिक्स जैसे हम ग्रीक फिलोसोफर्स में सोक्रेटिस की बात करते हैं, नॉलेज इज वर्च्यू, वहां पर नॉलेज को वर्च्यू बताया गया है। यूटिलिटेरियन थियरी की अगर बात की जाए तो मेनली ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, कि जब भी किसी थियरी में हम बात करते हैं कंसिक्वेंसेस के बारे में देखते हैं कि उसका क्या कंसिक्वेंसेस होगा, मैक्सिमम हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हैं। तो इस थियरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंसिक्वेंसेस पहले हम देख रहे हैं, बाद में कोई थियरी की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली कहा जाए परिणाम की हम बारे में सोच रहे हैं, तब उस थियरी को हम फ्रेम कर रहे हैं। यूटिलिटेरियन का यही है कि वहां पर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस अगर उस थियरी से मिल रहा है तो उसके वो फेवर में अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं। नेक्स्ट थियरी जो टोटली हम ऑपोजिट अगर देख रहे हैं वो है डिओंटोलॉजिकल थियरी, कांट की थियरी जिसको हम कहते हैं डू योर ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, जो टोटली यूटिलिटेरियन का ऑपोजिट। इस थियरी में अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर कंसिक्वेंसेस के बारे में बात नहीं है, कंसिक्वेंसेस को वहां पर एक मेन टारगेट ना रखकर सिर्फ फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी की बात है। वहां पर कर्तव्य के लिए कर्तव्य निर्वहन करना, कांट का थियरी। सेकंड अगर बात की जाए यूनिट 2, वहां पर वैल्यूज, डिलेमा, चॉइसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जस्टिस एंड फेयरनेस। यूनिट 2 बेसिकली जैसे जॉन रॉल्स का थियरी है व्हील ऑफ इग्नोरेंस, वो सारी थियरीज इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में। डिफरेंट थियरीज, एथिकल जो डिलेमास है, जब कोई थ्योरी फ्रेम की जाती है कि एथिकली अगर कोई डिलेमा है क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, क्या कोई एग्जाम्पशन है उन सिचुएशंस में, वो सब थियरी हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे, जिसके बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज हम वहाँ पर प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट एथिकल डिसीजन मेकिंग है, जिसमें कि रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ एंड अदर्स की बात है। प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, वहां पर कैसे कोई अगर एक्सप्लॉयटेशन है तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कैसे बता सकते हैं कि वो सही नहीं है। ये सारे यूनिट 1, 2, 3, 4 सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। और अगर बात की जाए इस पेपर की कि क्या सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल पर हम देखा जाए एप्लीकेबल है या थियरी, तो मेन जो है सिर्फ थियरी ही नहीं है कि आपने पढ़ लिया और उसके बाद फिर बस खत्म हो गया, इतना नहीं है। इस पेपर में हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है उन थियरी को, अगर आसपास हम अपना देखेंगे तो वो सारी चीजें ये पेपर हमें प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करने के लिए इसमें चीजें हैं। तो इस पेपर में सेमेस्टर 3 में सिर्फ यही पेपर है। सेमेस्टर 4 में हम योगा फिलॉसफी पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट अपना उसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।
Thank you, ma'am. Now I would like to request the Pol Science Department to continue with the orientation. Hello, good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, you're audible now. Okay, thank you, sir. The Department of Political Science is offering two SEC papers for third semester and fourth semester also. And the third semester paper is legislative support. And as we all know that what is legislative support in India, how it's working, then in this paper, we have to understand the real situation of legislative assembly and other roles also. Like, for example, the powers and functions of people representative at different tiers of government. Like we have lots of tiers. So the member of parliament, state legislative assemblies, functions of rural and urban local self-government, and Zilla Parishad. Sometimes we have to understand, we have some misconfusion regarding Zilla Parishad, municipal corporation, panchayat, ward system. So in this paper, you can understand each and everything situation which is related with Indian government and politics, like these some functional like these tiers like panchayat system, ward system, municipal corporation, Zilla Parishad also. So how it's working in the society and what is the role of common people in this tiers, how we can see and what is the real situation and what can we do for the society, for the political background and everything else. So I would like to explain some other points also, like legislative process, how it works, like how a bill become a law, right? Role of the standing committees, how many committees in Indian constitution, and how the legislative consultations work, you know? And then amendments to the bill and the farming of the rules and regulations. तो बिल कैसे बनता है, ठीक है, तो इसको चेंज कैसे करते हैं, अमेंडमेंट कैसे होते हैं, what is the law, है ना? So except these part, we have to understand the real situation of Indian constitution and government also. And इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, like how to make committees, types of committees. It is a very important part of this syllabus. Types of committee and role of committees in reviewing government finances, policies, programs, and legislation. So this paper is also important of budget system. So we will define you what is budget documents, overview of budget process, role of parliament in reviewing the union budget and railway budget also. What is the difference between union budget and railway budget also, and what was that railway budget on that time? So like examination demands of grants of ministers and working of ministries, how they work, right? So in this paper, you will understand each and every situation which is related with Indian government and politics also. But legislative is the most important part of Indian government, like legislative, executive, and judiciary. I know you know everyone, you know that these three systems works, how they work. But legislative support is main important part of Indian government and politics. And the role of media at last unit, the role of media and communication and the types of media, like their significance, legislators, and basic communication in the point, and the electronic media, and what is the social. Nowadays we are introducing like social media also, how. So this paper is very interesting for those students, those who are preparing for UPSC,
SSC, like other competitive exams. So legislative part आपका पूरी तरह से cover हो जाएगा इसमें, and there is lots of GK questions in which you can prepare well. This paper will help you, right? So this paper is very important and very interesting paper. And then second paper is the fourth semester paper is public opinion and survey research. So, okay, so public opinion and survey research, the paper is also important, that what is the importance of research in our life, right? जो लोग research field में जाना चाहते हैं या जो लोग research के बारे में आगे पढ़ना चाहते हैं, तो वो ये paper it will help you a lot कि ये paper किस तरह से वो research में आपका काम करता है. हालांकि ये पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिसर्च फील्ड में जाएंगे. और आई थिंक आज जो सिनारियो है वो रिसर्च का ही है, तो आई थिंक दिस पेपर इज आल्सो सेम इम्पोर्टेंस कि आप कैसे लिखते हैं. तो इस ये जो पेपर है इसमें आपको सर्वे रिसर्च, व्हाट इज सर्वे रिसर्च, व्हाट इज टाइप ऑफ इंटरव्यूज, टेक्नोलॉजीज, पोर्टफोलियोज, है ना, एंड देन the forms of interview, like इसके अलावा आपका जो basic quantitative data analysis, like introduction to quantitative data analysis, basic concepts, right? तो this paper इसमें आपको how to interpreting polls, like sometimes जब हमारा election चलता है, right? तो उस समय हम एक एग्जिट पोल हम लोग डिस्कस करते हैं, टीवी पर भी देखते हैं. सो व्हाट इज दैट रियल कंडीशन और हाउ वी कैन इंटरप्रिटेट दैट. सो इन दिस पेपर वी हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जिट पोल्स, not in related with political science or politics, also in every field, like in woman field, है ना. तो woman का what is the ratio of woman in education field, and how many women in working in education field or another field, research field, any other field, science field, So basically this paper definitely will help you that how can go for research and data analyzing and many more important topics in this paper. और साथ ही साथ what is sampling, right? How do we need to sample? So basically sample design, sampling error, non-response, and the types of sampling, how many types of sampling, survey research, quantitative data analysis, and interpreting polls. So this paper is really very important for those students, those who wants to go in research field also, and they want to know what is research field. Sometimes, so I have already introduced both papers, legislative support and public opinion and survey research. Both papers are really very important for your future, I think, for your examinations, for your preparation, UPSC, SSC and other field also. और अगर आप research field में जाएंगे तो both paper are same relevance or importance है, और very interesting scoring paper, or what should I say, but you must opt this paper and definitely you all will enjoy the paper. Thank you so very much, everyone. Thank you, Political Science Department. And I would like to request Sanskrit Department. जी नमस्कार. मेरे विभाग से पूजा जी हैं, डॉक्टर पूजा बुंदेल जी, वे बताएंगी इंडियन थिएटर पेपर के विषय में. जी सर. सभी को नमस्ते. मेरी आवाज आ रही? जी मैम, आवाज आ रही है. जी थैंक यू. तो ये थर्ड सेमेस्टर में, मेरा नाम पूजा बुंदेल है, मैं संस्कृत डिपार्टमेंट से हूँ, और अभी जो बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर सैक में हम पेपर पढ़ाएंगे उसका नाम है इंडियन थिएटर, भारतीय रंगमंच. तो पहले तो हम ये बताते हैं कि भारतीय रंगमंच जो है, नाट्य शास्त्र उसका आधार है. भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है. तो नाट्य है क्या, नाट्य क्यों इतना प्रसिद्ध हुआ है? जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो संस्कृत का एक नाटक है वो विश्व प्रसिद्ध है, तो वो क्यों हुआ है? तो काव्य की जितनी भी विधाएं हैं
उसमें महाकाव्य है, उपन्यास है। तो ये इसको हम सिर्फ पढ़कर ही हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन जो नाट्य है, जो रूपक हैं, उन्हें हम देख करके, पढ़ करके, सुन करके भी हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो नाट्य इसीलिए फेमस हुआ है क्योंकि हम उसे रंगमंच पे प्ले कर सकते हैं। तो मनोरंजन का एक बहुत ही प्रसिद्ध साधन हुआ है ये। उसी की वजह से जो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की रचना है वो इतनी विश्व प्रसिद्ध हुई है, जिसका कि रंगमंच पर भी अभिनय विश्व की कई जगह पे किया जाता है। उस पर कई सारी मूवीज बन चुकी हैं। और हिंदू कॉलेज का एक स्टूडेंट था जो अभी उसने भी ये पेपर पढ़ा है, इंडियन थिएटर प्लस ऑनर्स में भी एक स्क्रिप्ट एक्टिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग एक पेपर पढ़ाया जाता है। तो उसके थ्रू वो जो लड़का है वो 2023 में अक्षय कुमार की मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा है। तो ये पेपर पढ़ के ही वो इतना कुछ आगे बढ़ पाया है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन थिएटर जो पेपर है वो करियर ओरिएंटेड भी है। इस पेपर के अंदर हम जो पढ़ाएंगे वो है, उसमें 6 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में तो बेसिक नॉलेज के लिए है कि नाट्य शास्त्र का उद्भव विकास। तो उसमें हम वैदिक काल से लेकर के, पौराणिक काल से लेकर के आज तक, आधुनिक काल तक किस तरह से नाट्य शास्त्र का उद्भव विकास हुआ है। वैदिक काल में हम देखें तो पहले गीत और नृत्य का बहुत प्रकार से उल्लेख भी किया गया है और होता भी था। दूसरा, तो इस आधार पे भी हम मान सकते हैं कि नाट्य का उद्भव बहुत पहले से होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जो वैदिक काल है, तो ऋग्वेद के अंदर हमें सर्मापणि संवाद, यम यमी संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, तो ये संवाद मतलब डायलॉग्स जो है वो मिलते हैं। तो डायलॉग्स भी क्योंकि नाट्य का एक बहुत बड़ा तत्व है, तो यहाँ से वैदिक काल से हम इसका उद्भव मान सकते हैं। दूसरा एक है पुतली का नृत्य, मतलब हमारे राजस्थान में कठपुतली नृत्य उसको कहा जाता है। तो उसके थ्रू भी उसको नचा करके मतलब जीविका उपार्जन का ये साधन एक बनता है, जिसके थ्रू लोगों का मनोरंजन भी होता है, उनको इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो इस तरह से आज तक फिर धीरे धीरे जो संवादों का विकास हुआ, उसके बाद फिर छोटे छोटे नाटक बनने लगे, नुक्कड़ नाटक बनने लगे, जिससे लोगों का मनोरंजन होने लगा। तो इस तरह से इसका उद्भव विकास हुआ। उसके बाद में सेकंड और थर्ड यूनिट जो आपस में संबंधित है एक दूसरे से, कि नाट्य मंडप का आकार और प्रकार। तो जो भरत मुनि थे उन्होंने बेसिकली नाट्य शास्त्र में 3 प्रकार के नाट्य मंडप बताए हैं, विकृष्ट, चतुरस्त्र और त्रयस्त्र। तो नाट्य मंडप का मतलब है कि जो रंगमंच जो है उसका आकार कैसा हो, वो कितना बड़ा हो। तो उनका जो आधार रहा है नापने का वो था कि उसकी लंबाई और चौड़ाई किस तरह की हो। तो एक तो हाथ से लंबाई और चौड़ाई नापी जाती थी पहले, और एक डंडे से नापी जाती थी। आजकल तो और भी बहुत साधन आ गए हैं। तो पहले जो भरत मुनि नाट्य मंडप का निर्माण करते थे तो 2 चीजों से उनको नाप करके उनकी 3 तरह से उन्होंने भेद किया है। दूसरा, उन्होंने इसमें बताया कि किस तरह की चीजों का आपको रंगमंच पे प्रयोग नहीं करना है, या किस प्रकार के दृश्य या घटनाएं आपको रंगमंच पे नहीं बतानी है। जैसे युद्ध का कोई दृश्य आता है तो वो आपको नहीं बताना है, लेकिन आजकल की जो मूवीज आ रही हैं उस पे सब कुछ ही बताया जाता है। जैसे स्नान आदि के जो दृश्य है वो आपको रंगमंच पे नहीं दिखाने हैं, जो कि आजकल सभी कुछ दिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें रंगमंच से रिलेटेड है। फिर फोर्थ यूनिट है अभिनय, एक्टिंग। अभिनय जो है वो 4 प्रकार का है, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। तो जैसे कि अगर कोई राम का अभिनय करता है, कोई राम की भूमिका निभाता है, तो उसके लिए ये चारों ही अभिनय बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो सिर्फ आंगिक करके वो राम की भूमिका नहीं निभा सकता, वो सिर्फ वाचिक करके या सिर्फ सात्विक या सिर्फ आहार्य करके नहीं निभा सकता। उसको चारों का ज्ञान होना, चारों का अभिनय होना जरूरी है। आंगिक में जैसे अंगों का अभिनय होता है कि राम थे तो राम किस तरह से चलते थे, किस तरह से उठते बैठते, उनके आंखों का जो मुद्राएं वो कैसी होती थी, आंखों की भंगिमाएं कैसी होती थी, या वो किस तरह से बोलते थे, किस तरह से मुस्कुराते थे। उनका वैसे तो कहते हैं राम बहुत गंभीर थे, तो उस तरह से जब कोई राम का रोल करेगा तो उसको गंभीर प्रवृत्ति का ही दिखाना होगा। फिर वाचिक है कि राम किस तरह से बोलते थे,
वो तेज नहीं बोलते थे, ऊंचे स्वर में नहीं बोलते थे, वो बहुत ही धीरे मंद स्वर में बोलते थे। फिर है सात्विक। सात्विक मतलब होता है सत्व अर्थात भाव। आपके अंदर जो भाव है, तो भावों का अभिनय, कि अगर इमोशनल कोई सीन है तो उसमें आपको अश्रु, शोक, दुख ये ही दिखा करके आपको उसका अभिनय करना है। या कोई हंसी की बात है तो हास्य रस का आपको किस तरह से हंसी की कोई बात बोल करके या कोई चुटकुला बोल करके इस तरह से उसका अभिनय करना है। तो फिर है आहार्य। आहार्य लास्ट जो है इसमें है कि उसी तरह की, आप अगर राम का रोल कर रहे हैं तो आपको उसी तरह की वेशभूषा धारण करनी है, आपको उसी तरह के आभूषण लेने हैं, आपके उसी तरह के केश, आपके जो मेकअप आदि जो होता है वो सब आपका वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आंगिक, वाचिक और सात्विक तो राम के अकॉर्डिंग किया, लेकिन आपने जीन्स और टी शर्ट पहन करके आप राम का रोल कर रहे हैं, तो वो वहां पे बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। फिर फिफ्थ जो है वो नाट्य मतलब ड्रामा। तो जो नाट्य है उसके 3 प्रमुख तत्व होते हैं। वस्तु, वस्तु मतलब होता है प्लॉट, थीम, कथा वस्तु, इतिवृत्त, ये सब इसके नाम है। तो जो कथा वस्तु है, जो थीम है, वो कैसी होनी चाहिए? तो एक होती है आधिकारिक, जो मेन कथा वस्तु होती है वो उसे कहते हैं आधिकारिक। जैसे कि रामायण में राम की कथा शुरू से लेकर के लास्ट तक चलती है। और उसके बाद होती है प्रासंगिक, जो छोटी छोटी कथाएं बीच बीच में आती है, जैसे कि शबरी की हो गई, अहिल्या की हो गई, सुग्रीव की हो गई, ये सब। तो इस तरह से हम इस वाले में ये सारा कुछ बताएंगे उन्हें कि किस तरह की कथा वस्तु। और भी फिर इसके भेद होते हैं, पात्र की दृष्टि से, दर्शक की दृष्टि से, नायक की दृष्टि से, घटना की दृष्टि से। फिर जो अगला जो तत्व इसका महत्वपूर्ण है वो है नायक, एक्टर कैसा होना चाहिए। तो आजकल की जैसे जिस तरह के एक्टर्स आ रहे हैं कि सबसे पहला तो जो नियम है वो है कि जो एक्टर होगा, जो नायक होगा संस्कृत साहित्य में, वो होगा कि युवा होगा। लेकिन आजकल जितने भी शाहरुख, सलमान, आमिर ये सब हैं, वो सारे आपको पता है कि लगभग बुजुर्ग हो चुके हैं, फिर भी उनको नायक का रोल मिल रहा है। तो इसमें जितने भी नियम हैं कि नायक कैसा होना चाहिए वो सारा हम इसमें बताएंगे, प्लस कितने प्रकार का नायक होना चाहिए। और फिर अगला है रस। रस मतलब सेंटिमेंट, जो कि भरत ने 8 प्रकार के रस बताए हैं। कि अगर जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है तो उसमें श्रृंगार रस प्रमुख है उसमें, और बाकी रस भी आते हैं जो हेल्प करते हैं मुख्य रस को पुष्ट करने में। लेकिन बाकी का भी रोल होता है। जैसे कोई भी हम मूवी उठाते हैं जो कि मान लीजिए कि कोई भी मूवी जो है वो रोमांटिक है, लेकिन उसमें बाकी चीजें भी आती है टाइम टू टाइम, जैसे कॉमेडी भी आएगी, एक्शन भी आएगा, और है ना, ये सब आएगा उसमें। तो इस तरह से 8 प्रकार के जो रस हैं, श्रृंगार, वीर, रौद्र, भयानक, हास्य, अद्भुत, करुण आदि, वो सारे भरत ने बताए हैं। तो इसमें यही 6 यूनिट है जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे थर्ड में। बस यही है। थैंक यू। बाकी अगर मुझे कुछ रह गया हो तो ऋषिराज सर अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। थैंक्स। ठीक है, थैंक यू संस्कृत डिपार्टमेंट। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट टू come up for the orientation. Okay. So good afternoon, everyone. So in sociology, third semester, the paper is on the techniques of social research. Oh, sorry, this. Okay. So the paper is on the techniques of social research, and the objectives of this paper is to enhance the skills of students to understand and use techniques employed by social scientists to investigate social phenomena. And with the emphasis on formulating research design, hypotheses, methods of data collections, data analysis, students will gain some knowledge on how to conduct quantitative and qualitative research. And since the focus is on understanding through exercises, field visits, students will be sent for a field work for the project. And we have a sample here, photo sample here. This was a field visit to Manjugat Dila, a Pakistani refugee camp. Students visited the field, interviewed the inmates for the project, which was a part of the course. So the course outlined is here. You can go through later. For now, we'll go to the next one. Next one, what will students gain from this course? So critical thinking.
Students learn to critically evaluate while practically conducting research on the field, which will also enable them to understand the social reality in a comprehensive manner. Secondly, analytical reasonings. Data analysis and its interpretations would enhance their analytical skills as the students learn to combine the book view with a field view. Thirdly, moral and ethical awareness. Students will be synthesized about the ethical issues associated with doing research, since a major part of sociological research deals with human beings. And lastly, leadership. By doing research project, students will also learn to take initiative and responsibility. Next one, learning outcomes. So students, by doing project, visiting fields, will learn the practical applications of using the tools and techniques. And students are encouraged to learn to observe the social reality in an objective manner. So it will enable them to clearly distinguish the common sense from the scientific research. And by applying the research techniques or tools, students would also, students will critically look at the difference between a book review and a field view. Finally, students are equipped with basic and necessary skills of doing research, and therefore it increases their employability in any social research organizations. So, and lastly, not to forget, the medium of this of the instruction is bilingual, and books are available in both Hindi and English as well. So students need not worry. So with this, I conclude from here, and thank you so much. Thank you, Sociology Department. Now I request Music Department to take over. नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार संगीत विभाग से. 1 second, sir. Stop sharing the screen. Yeah, I'm trying to, but my screen is hanged. Oh God, Yeah, till then, Music Department can continue. Yeah. Can I continue? Yes, Yeah. yes. Thank you. Thank you. मैं डॉक्टर अविनाश कुमार संगीत विभाग से हूँ. आपका जो स्किल एनहांसमेंट म्यूजिक का जो पेपर है 3rd सेमेस्टर का, उसका टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ इंडियन म्यूजिक, यानी कि भारतीय संगीत के तत्व. तत्व ही कोई चीज होती है जिससे कोई भी वस्तु, आर्ट फॉर्म में भी तत्व से ही कला का निर्माण होता है. तो हमारा जो ये एसईसी का पेपर है, इसमें 2 हिस्से हैं. जैसा कि हम लोग जानते हैं, संगीत एक प्रदर्शन की कला है, मंच की कला है, तो परफॉर्मेंस इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. हमारा संगीत जो है उसको हम शास्त्रीय संगीत भी कहते हैं, यानी कि वो संगीत जिसका हमारे पास शास्त्राधार है, यानी प्राचीन समय से जिसकी एक परंपरा चली आ रही है. तो इसके जो 2 भाग हैं हमारे कोर्स के, एक है थ्योरी का और दूसरा है प्रैक्टिकल का. प्रैक्टिकल में 2 हिस्से होते हैं. एक होता है परफॉर्मेंस, यानी आप जो सीखेंगे उसको गाकर बताना या बजाकर बताना. गाना और बजाना ये 2 हिस्से इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो संगीत विभाग है उसके 2 सेक्शंस हैं. एक है गायन का और एक है वादन का, जिसके अंतर्गत सितार आता है. तो सबसे पहले मैं थ्योरी की बात करूंगा. थ्योरी का जो हमारा पेपर है एलिमेंट्स ऑफ इंडियन म्यूजिक, इसका थ्योरी का जो सिलेबस है, इसका कोर्स ऑब्जेक्टिव, जैसा कि नाम से ही हमको पता चलता है, एलिमेंट्स ऑफ इंडियन म्यूजिक, यानी हम तत्व, सबसे जो आधारभूत चीजें हैं उसके बारे में है इसमें हम बात करेंगे. तो कोर्स ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हिंदुस्तानी म्यूजिक का है उसको हम जान सकें. तो बेसिक चीजें क्या है? सबसे पहली चीज ये आती है संगीत. ये संगीत हम कहते किसको हैं? तो संगीत के अंतर्गत गायन भी आता है, वादन भी आता है और नृत्य भी आता है, यानी सिंगिंग, प्लेइंग सम इंस्ट्रूमेंट और डांसिंग, ऑल दीज 3 थिंग्स. इसके अलावा स्वर, सप्तक, वर्ण, अलंकार और लय, ये पारिभाषिक शब्द हैं. इनको हम, जो हमारा ये पेपर है इसके अंतर्गत सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे. इनको पारिभाषिक, इन शब्दों का की जो परिभाषा है उसके बारे में जानेंगे, यानी सबसे जो आधारभूत चीजें हैं संगीत का, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे. हमारा जो जैसा कि मैंने बताया कि 2 हिस्से हैं, एक है थ्योरी का और एक है प्रैक्टिकल का. दोनों के ही 8 यूनिट्स हैं, दोनों की ही 8-8 यूनिट्स हैं.
तो थ्योरी का जो 8 यूनिट है, उसमें से पहले यूनिट के अंतर्गत जनरल डिस्कशन एंड स्टडी ऑफ संगीत, स्वर, सप्तक, वर्ण, अलंकार और लय। ये बहुत ही आधारभूत चीजें हैं जिसके बारे में अगर जिसको भी संगीत के विषय में जानना है तो सबसे पहले इन बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिना स्वर को जाने, बिना लय को जाने या बिना सप्तक को जाने हम संगीत को नहीं समझ सकते। संगीत के अंतर्गत गायन, वादन, नृत्य को समझेंगे। स्वर के अंतर्गत शुद्ध और विकृत स्वर क्या होते हैं। हमारे शास्त्रीय संगीत में 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर हैं, उसके विषय में बताया जाएगा। हमारे शास्त्रीय संगीत में कंठ के आधार पर 3 अलग अलग सप्तक हैं, मंद्र, मध्य और तार, जो कि गले की जो फ्रीक्वेंसी है, कि जो गले की जो तारता है उसके विषय में है, उसको बताया जाएगा। इसके अलावा वर्ण, गान की जो क्रिया होती है वो कैसे की जाती है, और लय। संगीत में स्वर के अलावा ताल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है। बिना ताल के संगीत संभव नहीं। तो उस ताल से संबंधित चीजें लय में बताई जाएंगी, जिसमें 3 चीजें होंगी, विलंबित, मध्य और द्रुत, यानी स्लो, मीडियम एंड फास्ट टेम्पो। इसके विषय में बताया जाएगा। जो यूनिट 2 है वो है भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी जी का जीवन चरित्र जो है, उनका जो बायोग्राफी है। हम सब जानते हैं MS सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न रही हैं, और ये दक्षिणात्य संगीत यानी हमारा जो कर्नाटक संगीत है, दक्षिण भारत में संगीत की जो विधा प्रचलित है उसकी एक प्रकांड विद्वान थी। उनकी बायोग्राफी इसमें यूनिट 2 में है। जो तीसरा यूनिट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, उसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले है द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक ऑन फिल्म सॉन्ग्स। शास्त्रीय संगीत ऐसी एक विधा है जो कि आम जनमानस में प्रारंभ से ही, आम जनमानस में हर एक के भीतर ये चीज बहुत प्रचलित नहीं होती, लेकिन जो फिल्म का संगीत है वो हम सभी लोग कहीं ना कहीं सुनते हैं, समझते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शास्त्रीय संगीत के बिना फिल्म संगीत भी संभव नहीं है। जितने भी फिल्म संगीत में भी बड़े बड़े जो कि कलाकार हुए हैं, जैसे लता मंगेशकर जी हो, मोहम्मद रफ़ी हो, आधुनिक समय में भी अगर हम देखें तो सोनू निगम हो या अरिजीत सिंह हो, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि फिल्म संगीत के ये महानतम कलाकार हैं, वो सभी शास्त्रीय संगीत में अच्छे से ट्रेनिंग लेकर आए हुए होते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं वो भी शास्त्रीय संगीत के आधार पर ही फिल्मी गानों का निर्माण करते हैं। ये देखा गया है फिल्म के संदर्भ में भी कि वो फिल्मी गाने जिनको हमने किसी राग के आधार पर, किसी शास्त्रीय राग के आधार पर जिसका निर्माण किया गया, वो लंबे समय तक लोगों में प्रचलित रहे और उनको लंबे समय तक लोग पसंद करते रहे। आज भी कई ऐसे पुराने गाने हैं जिनको हम कितनी बार भी सुने तो वो पुराने नहीं लगते। वो पुराने क्यों नहीं लगते? उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले तो कलाकार, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, संगीत निर्देशक है, उसका योगदान है। लेकिन उसमें जो खास तत्व है, एक खास एलिमेंट है, वो है शास्त्रीय रागों का उस गाने में प्रभाव होना। तो इसमें सबसे पहले ये दिखाया जाएगा कि किसी भी गाने का जब हम निर्माण करते हैं, कोई भी चीज जब हम कंपोज करते हैं, तो उसमें शास्त्रीय रागों का उस पर इन्फ्लुएंस जाने अनजाने कैसे हो जाता है। कई बार बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, चाहे मदन मोहन हो, चाहे नौशाद हो, चाहे वर्तमान समय में AR रहमान हो, जाने अनजाने कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत को वो इस्तेमाल करते ही हैं। वो सभी क्लासिकली ट्रेंड म्यूजिशियंस हैं। जो इसका दूसरा पार्ट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइन आर्ट्स इन लाइफ। हमारे जीवन में ललित कलाएं यानी फाइन आर्ट्स, ये 5 हैं, यानी काव्य कला, पोएट्री, मूर्ति कला यानी मूर्ति निर्माण की कला जिसको स्कल्पचर कहते हैं, स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर, चित्रकला यानी पेंटिंग, और संगीत कला यानी म्यूजिक। इसमें म्यूजिक जो है उसको फाइन आर्ट में भी द फाइनेस्ट आर्ट कहते हैं। उसका कारण यह है कि संगीत के जो तत्व हैं वो बहुत ही सूक्ष्म हैं। स्वर, ताल, लय, इनको ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, बस हम इनको अनुभव कर सकते हैं। और अनुभव के आधार पर ये आपको आनंद प्रदान कैसे करते हैं, इन सभी 5 कलाओं के अलग अलग तत्वों को हम कैसे अपनी आम जीवनचर्या में, रोज के कामों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको यूनिट 3 में
आपको बताया जाएगा। यूनिट 4 जो है इसमें राग के विषय में आ जाएगा। हमारा शास्त्रीय संगीत रागदारी संगीत है, राग पर ही आधारित है। तो थर्ड सेमेस्टर में यानी SEC 1 में हमारे पास 2 राग हैं जो कि बहुत ही आधारभूत राग हैं हमारे शास्त्रीय संगीत के, राग भैरव और राग अलहैया बिलावल। इनका शास्त्रीय परिचय दिया जाएगा। अगला है यूनिट 5 जिसमें कि अलंकारों के विषय में बताया जाएगा, और यूनिट 6 में हमको ताल के विषय में बताया जाएगा और साथ में स्वर मालिका के विषय में बताया जाएगा। इसके बाद जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इन्हीं सारी चीजों के प्रैक्टिकल रूप के बारे में बताया जाएगा। जैसे भैरव हमने थ्योरी पढ़ा तो उसके विषय में हमको गाना कैसे है, उसमें कॉम्पोजिशंस कैसे गाना है ये बताया जाएगा। उसके आरोह अवरोह पकड़ को कैसे करना है, स्वर मालिका को कैसे करना है, जो ताल हमने सीखे उनको तबले पे कैसे बजाना है, जो गाने हमने पढ़े उनको हारमोनियम पर कैसे बजाना है या सितार पे कैसे बजाना है, ये बताया जाएगा। इसके अलावा अंत में हमारे पास एक फील्ड विजिट भी होता है SEC 1 के अंतर्गत, जिसमें हम संगीत नाटक अकेडमी या IGNCA या फिर ऑल इंडिया रेडियो जाते हैं, जिसमें छात्रों को ये बताया जाता है कि संगीत को अलग अलग जीवन के पहलुओं में हम किस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कैसे हम संरक्षित कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Now, I suppose Economics Department has one paper to discuss, and I request Economics Department to wrap up in a couple of minutes. Yeah, thank you, Akash. Yeah, so there was one paper that Amulya sir was trying to talk about. I'll just briefly talk about that. So in semester 4, we have the paper Research Methodology. So in SEC 3, in SEC third semester, we have Understanding Economic Survey and Union Budget that I had already talked about with you. And in the fourth semester, we have Research Methodology. Research methodology is a theoretical paper. It talks about how to go about doing a research. So research is like you find information about a topic on Google, or you search a topic. Say, for example, you want to learn something about some topic, so you generally Google about it or read about it. But that's not kind of a research undertaking, because say, for example, you're concerned about certain thing, you observe certain phenomena, you observe certain pattern in the society, or you have, or say, for example, you just want to inquire about certain thing. So how to go about it so that it is meaningful, it is academically sound, it is done in the right order. So how to go about it is something we learn in the fourth semester research methodology. So we say, for example, there's a topic, say that you say that X is affected by Y. So this could be your topic. So some phenomena, X is affected by Y. So you have observed it, or say, for example, you want to inquire whether this is true or not. So you would go about research like seeing whether somebody has written about it, whether there is existing literature which has talked about it. Then you go about seeing that how you would understand it. Say you would want to take interviews, you want to survey people, or you want to check data, secondary data, you want to collect it yourself, which is a primary data. So how to collect data, how to process that data, how to present that data, and how to come to conclusions and analysis of that data, and how to write that report is something we learn in the research methodology. So that's the paper in the fourth semester. Amulya sir was trying to explain it, but his internet wasn't okay. So this is about the fourth semester SEC paper, research methodology. Thank you, guys. Thank you, Economics Department. So with this, we come to the end of orientation for SEC papers. I would like to thank all the teachers. But before concluding, I would like to just address few queries, the common queries that I saw in the YouTube chat. There was a query regarding the computer science and mathematics department offering SEC. So as per our information provided by the department, these two departments are not offering the SEC papers for the students. The second query was that will they be able to change their SEC papers in third semester and fourth semester? The answer is yes, they can change, but depending upon the combinations and the seat availability. And the third query was that will the options to fill up SEC form is open to BA honors? No, it is only for the BA program students for which the options are taken up.
Okay, these are the three general queries that was in the chat box. So I thought of taking it up. And rest, I request all the concerned faculty members to take up the general queries. And if there is something specific, they can email us to the CBCS committee email ID that has been provided in the notice board. Notice that has been shared with all of you and the student group as well. Now I request Renu ma'am to take over. So as the session for orientation session for both the GE and SEC courses has been over. So now within few minutes, we will be sharing the Google form link. As the link is same for GE and SEC, the form link will be shared with the TICs only, and TIC will circulate the link with the third year students, those who are going to study these papers in third semester. In case of any query, please approach to your TICs. And in case still the query is not resolved, we are here to solve your queries. Please fill the form as soon as possible. The link will also be updated on the college website. Anything other, Mansi and Akash, if I forgot to mention, please update. No, ma'am, I think we are pretty much done with everything that is to be shared with the students and the teachers. Yes. So now I thank Akash and Mansi for being there and for giving me full support throughout 24/7, basically. Thank you, for having Thank this you, orientation on this platform so smoothly. I also thanks all the faculty members to being with us. I know it's tough to have the orientation on same day, but I thought this is the best way to save the time of these students, to have all the students have same platform, because the orientation is being done by the students being who are oriented are common students. So now we are winding up this session and we are there with the email IDs and all. Please TICs, in case you have any query regarding form, please approach us, and within few minutes we are be circulating the thing. Thank you so much. So we are winding up this session. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.